हेलो एवरीवन। और कैसे आप सभी। नमन नमस्ते सबको और स्वागतम स्वागतम। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई स्ट्रीम में, एक नए एपिसोड में, किसके, होराइजन फोरबिडन वेस्ट के। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने होराइजन जीरो डॉन कुछ ही दिन पहले ख़त्म करी है, परसों तरसों। तो जब से हमने होराइजन फोरबिडन वेस्ट स्टार्ट करी है, तो जिसने होराइजन जीरो डॉन के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, वो पहले देख लेना फिर ये देखना, ठीक है। मतलब कि होराइजन जीरो डॉन एक तरह से पार्ट 1 है, और ये जो हम गेम खेल रहे हैं होराइजन फोरबिडन वेस्ट, ये पार्ट 2 है। तो ठीक है, होराइजन जीरो डॉन के भी और इस गेम के भी एपिसोड एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और वो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाके देखना, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बाकी अगर कोई भी गेम प्ले तुम लोग देखना चाहते हो तो तुम लोग को मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही। हमने 60 से भी ज़्यादा गेम खेल लिए अब तक, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम 500 गेम्स क्रॉस कर देंगे इसी साल में, ठीक है। तो चलिए लौंडो, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 3। नहीं, कौन सा एपिसोड है, चलो तुम लोग बताओ। तुम लोग कहोगे हैं वीएम जी भाई सिंगल लोगों की तरह कर रहे हो, हैं रील्स भूल गए तो हैं हमसे पूछ रहे हो। सही बोला, एपिसोड 3, ठीक है। हाँ, तुम लोग तो टाइम लगा दोगे, कल तक जवाब दोगे। तो ठीक है लौंडो, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज का एपिसोड 3। तो मैं कभी गलत बोल सकता हूँ क्या? मैं खुद ही एपिसोड स्ट्रीम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा कौन सा एपिसोड है। तो चलिए लौंडो शुरू करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, ठीक है, बाद में होता रहेगा हंसी मजाक। एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का, ठीक है। तो चलिए लौंडो शुरू करते हैं, जहाँ से गेम छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी जिसने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, ठीक है। मुझे भाई बता रहे हैं एपिसोड 3। हाँ हाँ, पता है लौंडो, मेरे को पता है, मुझे पता है, तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ से छोड़ी थी गेम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों को पता ही होगा, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना ट्रेनिंग करने आए थे, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर से हम बात करते हैं, तीनों टास्क पूरे कर लेते हैं, फिर हम चलते आगे। तो दोबारा से मैंने ये करा था कंप्लीट, क्योंकि गेम यहीं से चला सकूँ मैं, ठीक है लौंडो। बाकी मैं 9:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट कर लेता आज, जल्दी खाना खा के फ्री हो गया था मैं। खाना कितना ही खाया यार, थोड़ा सा तो खाया मैंने। तो मैंने सोचा स्ट्रीम स्टार्ट कर लूँ, बट गेम कह रही कि भाई दोबारा कंप्लीट कर, दोबारा कंप्लीट कर। तो भैया मेरे को दोबारा कंप्लीट करना पड़ा। तो ग्राउंड की वो तुम लोग पता ही है, आंटी वाला जो मिशन कर रहे थे हम उस दिन लास्ट में स्ट्रीम एपिसोड के, तो वो दोबारा कंप्लीट करना पड़ा। तो वहीं से स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट करते लौंडो वहीं से जहाँ से छोड़ी थी गेम, ठीक है। 1 मिनट में कंट्रोल रेडी कर लेता हूँ। तो चलिए लौंडो शुरू करते हैं। Frost won't help here. The machine was born for the cold. An old world ruin. Might be the one that Utaru and Plainsong told me about. Let's see if there's anything useful inside. An ancient rail cart. Huh. I wonder if it can still move. What does this switch do? Okay. Nice. Deposit of green shine. There's some kind of relic in that room. How do I get in there? Okay, what's in here? Pass along. Looks like this switch controls the tracks.
key module. Yeah. This could be useful. There we go. This needs a code. Maybe something around here can help. Got it! Interesting. This could help. मैं दसाना मिले क्या तू ओए ओए दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू करते हैं भाई से दबाते अगड़ियाँ इसमें क्या वो फटेगा 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 फट गया मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसता हूं। तुमको ज़्यादा ही जल्दी आ गई है स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले ही आ गई एक कोचिंग वर्मा भाई अब आए हैं बड़े लेट हो गए वर्मा भाई आज पहली बार As far as it goes. Tracks are lined up with the curved side now. मैं पढ़ाई कर रहा था पूरा दिन क्योंकि आपने स्ट्रीम करी नहीं थी अच्छी बात है यार ऐसे तो टाइम यूटिलाइज करा करो तुम लोग मैं जिस दिन स्ट्रीम ना करूँ उस टाइम तुम पढ़ लिया करो तुम लोग अच्छा और अब डिनर कराता इसलिए अब आया हूँ ओके ओके अभी ओके बोलता है एलोय भी ओके ओके बोलती है दोनों एक साथ ओके ओके बोलते रहते हैं एलोय और मैं किसी जन्म के भाई बहन तो नहीं है भाई पता नहीं भाई हाय एलोय पतली कमरिया बोले हाय 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 नोंडो कल तुम लोग बड़ा जग रहे थे ना कि अरे बीएमजी भाई आज आपका बर्थडे है आज तो हम जगेंगे आज जगना बेटा तुम लोग क्योंकि आज हम देर तक स्ट्रीम करने वाले हैं कल मेरे को नींद आ रही थी तो तुम लोग को जगना था कि बीएमजी भाई आपका बर्थडे है हम जगेंगे तो भाई आज गेम के लिए जग लेना तुम लोग ठीक है Okay, I think that's all this ruin has to offer. पूरा दिन स्ट्रीम नहीं करी इसलिए अभी अब कसर लिखा लूँगा मैं तो ख़त्म करनी है भाई कल होराइजन फोरबिडन इसलिए आज भी इसकी लेट तक स्ट्रीम करेंगे और कल भी इसकी लेट तक स्ट्रीम करेंगे लेट तक देर तक यार दस घंटे की गेम रह रही है हमारी भी मैंने दिशा में तेल क्या होता है कुछ भी गा रहा हूँ रिप्लाई नहीं आया तुम लोगों को कुछ कि हाँ बीएमजी भाई जग लेंगे जब रोबलोस खेलनी होती है तो बड़े देर तक जग लेते हो तुम लोग
see you, champion. Thick. Land out here is sick with blight too. But we'll be able to heal all of it. Once Guy is strong enough to capture Hephaestus. Race? They definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. North Settlement. Gonna have to watch my step. दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू। Spotify ने ये गाना सुना दिया मुझे, तो बजे जा रहा है दिमाग में। I can catch my breath here. लोंडो कल की गेम्स की मैंने सारी तैयारी कर ली है और आने वाली गेम्स की भी तैयारी कर ली है। वाह वाह ये तुम्हारे भी भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई बिल्कुल भी। मेरे से खाली नहीं बैठा जाता लोंडो, तबीयत खराब होने के बाद भी ना। तबीयत खराब थी बट फिर भी मैं काम कर रहा था कुछ ना कुछ। Almost looks like a spear stuck in the sand. तुम लोग को भी वैसे ये बात पता ही होगी कि बीएमजी भाई खाली तो बैठे नहीं होंगे, तबीयत खराब हो गया ना। One more step. The Tenakth don't suffer outlanders in the clanlands. I was given rite of passage by Marshal Fashav. I'm not here to fight. They're like blood. This is the warrior who defeated Gruda, champion of the traitor Regala. Her life is not ours to take. You may enter, but mind our ways. You will be watched. I'll keep that in mind. एंट्री मिल जाती है भाई, गुंडों की तरह चलती है। लो देखा गुंडों की तरह चला। अच्छा ठीक है, जाती है अंदर। एलोय को देखने की देरी होती है बस। एलोय को देखते ही लोग एंट्री दे देते हैं। एलोय को भाई हो रहा है, भाई हो रहा है एलोय का। I do need the trade, so come back. Yeah? What's going on here? Close combat training. Fighting at long range is a good strategy for machines. But fighting an enemy soldier means getting up in their face. I'm Lee Rocket. I run the training pit here in Scalding Spear. Only a few Outlanders have ever made it out this far west. But from what I've heard, you're a pretty good fighter. You can train here if you like, but you're only allowed your spear and a practice bow in the pit. Everything else stays with me. And if you're looking to test your fighting skills, I also offer challenges. Complete all of them, and you'll get to go up against me. And what happens if I beat you? I'll grant you a mark to prove you've mastered this training pit. If you earn marks from me and the pit masters of the Bulwark and Thornmarsh, you'll earn the right to challenge the Enduring. I think I've heard of the Enduring. Some kind of Tenakth trainer? More than just a trainer. The Enduring is a legendary fighter among the clans. The master of masters. Only those who prove themselves in the pits get to train with the Enduring. Including Outlanders? Yes. If you can beat all the pit masters. So, what will it be?
Should you want to practice or take on a challenge, just let me know. Just as you can combine single attacks, you can also chain combinations. Try it with this one. हल्ला गुल्ला हो रहा है। चलो भाई चैलेंज कंप्लीटेड। Do something different. I want you to practice using aerial slash to chain into an aerial shot. Challenge completed. Yes. अरे तेरी चल Skill, very skilled. किल वाले तो हैं हम, किल वाले तो हैं। चल All right, I yield. That was a good fight. Pretty sure I'll have a bruise to remember it by. Here, a mark as promised. Thanks. One down, I guess? Go to the training pits in the Bulwark and Thornmarsh. Earn their marks, then you can challenge the Enduring. Few have ever done so, but I think you might have a shot. And if you want to train more or take on another challenge, let me know. The pit will always welcome you. I'll be going. Let me know if you want to train in the pit again. बादल गरज रहे क्या गेम में? साफ तो हो रहा है मौसम। यार मिट्टी उड़ती रहती है भाई। मिट्टी बड़ी तो मिट्टी उड़ेगी, ये भी बात है। एक चैट में क्या बकचोदी चल रही है? कुणाल तुम्हारी तबीयत ख़राब थी इसलिए स्ट्रीम नहीं करी तुमने। मेरे को बताया भी नहीं तुमने कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तुमको लग दी आप डॉक्टर हो, जो आपको बताना ज़रूरी था। अरे वर्मा भाई, अरे भाई बाबा जी मैनू हीर मारे। ओ भाई मैं बता क्यों मेरे को नहीं बताएगा तो फिर किसको बताएगा? मेरे को चिंता है। मैं बात करता नहीं किसी से। अब मैं स्पेशल मैसेज करूँगी और मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मेरे को ट्रीटमेंट दे दो कोई। भाई जिसकी तबीयत ख़राब होती है कि वो मैसेज करके बताता है बंदा आपको कि अरे मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ कोई मेरी केयर कर लो। मैं जो बड़ा यूट्यूबर हूँ क्या? मैं बड़े यूट्यूबर्स की तरह हूँ क्या? मैं सिंपैथी मांगूंगा लोगों से कि अरे लोडो मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मेरी चिंता करो। अरे पलक मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मेरी चिंता करो। अबे मैसेज करके कौन बताता है भाई जिसकी तबीयत ख़राब होती है? वो तो तुम लोगों को बताना पड़ा, वो भी स्ट्रीम की वजह से। नहीं तुम लोग सोचो BMG भाई मरमुरा आ गए। ना भाई, इसलिए बताना पड़ता है कि मैं स्ट्रीम क्यों नहीं कर पाया। तुम लोग सोचो BMG भाई कहाँ गायब हुआ एकदम से, इसलिए बताना पड़ा। बाकी मैं तो किसी को मैसेज करके नहीं बताता, मैसेज ही नहीं करता भाई मैं। तबीयत ख़राब करने के लिए, तबीयत बताने के लिए क्या मैसेज करूँगा मैं किसी को? नॉर्मली मैसेज ही नहीं करता मैं किसी को। तबीयत ख़राब करने के लिए कौन सा कर दूँगा मैं किसी को मैसेज? अरे मेरी तबीयत ख़राब है। क्या हूँ? चला लो अपनी। क्या चला लूँ अपनी? चला तो रहा हूँ अपनी बैल, चला तो रहा हूँ। Yeah.
ancient ruin. Turned into a Tanakh stronghold? Could Ether be inside? Poking around's not going to be easy with Tanakh's warriors everywhere. Regala's army only grows in strength. बात करते हैं She इनसे। struck a blow to us at the embassy. This much is true. But we are made of steel. We will not yield. Regala's forces may seem strong now, but Her machines took out my entire squad. remember the visions. The old ones didn't choose their fight, but still they stood firm. They didn't falter. And neither will we. Blood of the Ten. You've come to us. You know who I am? Oh, the warrior with hair like wildfire who defeated Regala's champion at Barren Light. Yes, you are known to us. I am Dekka, chaplain of the Lowland clan. You've come to speak with Chief Hikaru. Not quite. There's something I need here. Anything you need, the chief will provide. Come. Is that one of the visions you were talking about? Yes. The records of the Ten. I can show you them, if you like. On the way to the chief. Aloy कहती है These visions. You said they're the records of the Ten. Who are they? Old ones. Who fought a heroic battle against machines on this very soil long ago. Their deeds are honored in the visions. At least what remains of them. To be remembered and exalted. There used to be more of these visions? Many more. Once this place was filled with light and sound. But over the years, they've fallen into darkness. One by one. That is why chaplains are so important to the tribe. We remember all we can of the visions. Etched in our flesh. Passed down by word of mouth from generation to generation. One day the whole grove may go dark. But chaplains who come after me will keep the memories alive. Why does Hikaru want to see me? We are at war with Regala. And you've already shown that you can stand against her. I'm not here to fight a war for you. Not for us. With us. But I won't try to persuade you. That is for the chief. He can be very convincing. All right, let's go see Chief Hikaru. He's in his throne room, at the far end of the grove. Come. Be welcome among the records of the Ten. अलोय भी ना ऐसे चौक होती है, कहती है कि अरे आप मेरे को जानते हो? अरे अलोय तेरे को कौन नहीं जानता? बस मेरी गलियां की आंटियां नहीं जानती तेरे को। Glitched. Incomplete. आगे तो सब जानते तेरे को अलोय। काम इतने महान महान कर रखे हमने अलोय ने, मतलब कौन नहीं जानता फिर। तैनू में दिस क्या होता है? तैनू में दिसानी मिले क्या तू? When the time came for battle, they took to the तैनू में skies and दसानी leaped to मिले glory. क्या तू? All Tanakh seek to दिल follow their तू example. जा तू, For the chief, it was one of the few things the clans had in दर्द common. दी दवा तू। जीरो वॉचिंग, अरे वाह भाई वाह। The chief is inside. Are you ready to see him? रेडी है देखने के लिए? I'm ready. Good. पूछ तो रही है आंटी ऐसे कि तू रेडी है चीफ को देखने के लिए? चीफ को देखने के लिए जैसे दुल्हन है वो इंतजार कर रही है स्वागत पे बैठ के हमारा। नहीं लड़का है लड़की है, देखते हैं भाई। अरे अरे दुल्हन है क्या जो मार रही है इतना वो चीफ? कहाँ जा रही है आंटी? एलोय को चैन नहीं है, एलोय देखती रहती है फोकस ऑन करके। It's on a
beneath a throne. I will see you soon, Outlander. मैं तो सब बाद में The मिलता हूँ savior आउटलैंडर। of Meridian. अच्छा ये अंकल है। I am told you held back Regala's forces outside Barren Light. And defeated her champion, Grutta, in single combat. Impressive. I met Fashav there, too. He said you were a great warrior. And a man of honor. His death is a painful loss among many. We will not soon recover from the massacre of our marshals. But if you are here to pledge your service, that could help considerably. I am not here to fight for you. I need something in that basement. Something that will save many lives, yours included. It's not something you can see, but it is there. I have seen it. You have named your price. Now I name mine. With my marshals dead, I need your spear. Help me defeat my enemies, and I will grant you access to the chamber below. गलत रख रहा है भाई। I don't have a price. I am not a hired killer. सही I'm बात here है। to save lives, more than you can count. I count the corpses of marshals slain. I count hundreds more Tanakh, whose lives hang in the balance. I will fight for them. I will kill anyone who threatens the peace, and you will too, if you want me to open the door to the chamber below. Okay. So by that logic, what's stopping me from killing you right now? And taking what I need to save everyone? You could try. You might even succeed. Either way, you must fight. My way might hold off Regala and the slaughter she craves. Fine. What do you need? I need more marshals to keep the tribe together. Such warriors can only be promoted at a trial by combat called the Cool Route. I've sent out a call for the competition, but since Regala seeks to undermine me, she is certain to attack it. She'll want to kill me in front of the assembled clans. So what, you want me to be your bodyguard? No, to defend the Cool Route. But there is more. Knowing Regala will attack, one of the clans have balked at sending their contestants. You must go north and force Tekote, the commander of the Sky Clan, to submit and send his best. Force him to submit? Do whatever is necessary. I can't hold the Cool Route with 2 of the 3 clans in attendance. Marshal Kathala will assist you. He was maimed at Barren Light, but he can still be of use. I sent him ahead to the northern village of Stone Crest. Meet him there, and he will guide you to the Sky Clan stronghold. If you have any questions about your mission, now is the time. I'm sorry about Fashav. He seemed like a good man. More than a man. A bridge between Tanakh and Karja. No Outlander ever earned our respect as he did. I had hoped he would be my voice in Meridian. That peace with the Karja might become something more. An alliance? In exchange. The Karja have much we lack. Our deeds are written in ink upon our bodies. Our memories die with our flesh. But the Karja never forget. Their deeds are written in book and scroll. You wanted to learn from them? As I learned from Fashav. He will be missed. I'll do what you want, and go north to deal with Tekote. But you'd better not forget about our deal. You will have what was promised, if you succeed. Speak to Dekka on your way out. She will arm you for the road ahead.
तो लोंडो क्या वर्मा भाई क्या कह रहे हैं, ये एलोय को किराए का टट्टा समझ रहा है। एलोय नहीं, एलोय ने नहीं कह दिया, वो किराए की टट्टी नहीं है। जो कोई इसको हायर करे अपने लिए, वो जान बचाने के लिए सब कर रही है, वही तो। You have an old world recording? This box was speaking with voices of the old ones, but now there's noise over them. Let me take a look. Where did you find this? We took it from an Oseram delver. She was trying to steal it, and other artifacts from Tanakh territory. The others were going to bury it in the sand with her, but then I heard the voices. Well, the data here is badly corrupted, but... Delta Juliet 9, you are weapons-free and clear to engage the swarm. Good hunting. Copy that. We'll buy Zero Dawn the time you need. Delta Juliet 9 out. The voices of warriors from the past. And that Oseram wanted to sell them for shards. The bravery of the 10 should be remembered. I'm not sure what you mean by the 10. These voices came from the final battle of the Old Ones. Another battle? I could learn more about it if I could find the other boxes. That Delver did say there might be more recordings to be found in the wreckage of ancient flying machines. She claimed she had a way to locate them. Yeah. The box with the voice data on it is emitting a locator signal. I could use it to find the others. If you do then, bring them back here. I will see to it that they're treated with proper respect. Whatever sacrifices were made by these ancient soldiers, we will honor them. Let me know when you have one that you'll part with. If I find more of those recordings, I'll bring them back to you. Yeah. The anti-black boxes... My focus can detect beacons from those recording devices. Should help me to find any others that are still out there. मैं बोल रहा हूँ एलोय, हाँ तो ये एंटी बॉक्सेस इकट्ठा करती है, ब्लैक बॉक्सेस, जिसमें... Hikaru said you have something for me? A weapon to aid your mission. You'll need it for the long road to Stonecrest. Many machines prowl along the way, and our scouts have sighted Regala's rebels in the area. Machines and rebels. Nothing I haven't faced before. Indeed. Head north towards the foothills. Ascend its slopes until your legs burn and the chill air catches in your chest. Then you'll know you're in the Sky Clan's domain. Strike true as the 10, Aloy. हाँ तो जो आंटी मिलियम है वो आंटी ब्लैक बॉक्सेस का इकट्ठा करती है। ब्लैक बॉक्सेस में रिकॉर्डिंग है ओल्ड वंस लोगों की। ओल्ड वंस लोग तुम्हें पता ही है कौन थे। ओल्ड वंस लोग वो जो कि पहले मर चुके थे, ठीक है। तो वही उनकी रिकॉर्डिंग होती है कब की, उनकी बैटल की, बैटल फील्ड की, जब उन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उन सब की उस टाइम की रिकॉर्डिंग है इन ब्लैक बॉक्सेस में। तो आंटी कलेक्ट करती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के लिए बॉक्सेस को। तो आंटी हमें सुना रही थी कि क्या है ये, कहाँ है, क्या चीज़ है ये। तो हमने स्कैन करा तो हमें पता चला है बॉक्सेस है और ये ओल्ड वंस की आवाज़ है, ओल्ड वंस लोगों की, जब वो आखिरी बैटल लड़ रहे थे अपना, जबकि रिकॉर्डिंग है ये। तो आंटी कह रही और बॉक्सेस कलेक्ट करके ला लो मेरे लिए। मैंने कह दिया ठीक है लाते हैं। हमने पूछा कहाँ पे मिला तो उसने जगह भी बताई थी हमें। आंटी थी कैसी अजीब से। दिल तू जान तू, जीना है मरना मेरी गिनती वजह थी। जब चूजा जा रहा था, क्या जा रहा था ये, पता नहीं क्या है ये। रुजा मारता हूँ तेज।
दो था ये शायद, क्यों हुई कहानी हुई। ये मिल गया। Stranger, help me kill this thing. अच्छा मदद करनी है इसकी, क्या कर रहे हैं। ये बस तेरी हो, बस तेरी। Now the tide's turned. चल ये ले, अब कम मरेगा। चल शिश हमारी तरफ। ये ले, अबे भाई, अबे शिट, आपकी हेल्थ खा गया साला। Done. और मदद तो कर दी इसकी, मार दी हमने ये कलेक्ट कर लेते हैं। Please, my squad mate needs help. क्या कर रहे हैं भाई, तेरे से बात कर रहे हैं, रुक जा, चीजें कलेक्ट करता हूँ पहले। Wait, slow down and explain. आराम से एक्सप्लेन Tay कर। and I were heading south with supplies from Saltbite when machines attacked. I left her behind so I could get help from the Grove and ran straight into another machine. Thank the 10 you were here to help. So your friend is still up the road, fighting machines? That's what I'm trying to tell you. I'll bail her out if I can. You go on and get those reinforcements. Will do. I'm in your debt. ठीक है हमारे शांत ले रह गया आपको। ठीक है भाई, एलॉय का स्टाइल देखा करो तुम लोग एक बार, तुम लोग खुद नोटिस करते हो, गुंडों की तरह बात करती है। हाँ ठीक है, तेरे दोस्त अभी भी वहाँ लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं मदद करती हूँ जाके उनकी। तू जा, गुंडों की तरह भाई, गुंडों मवालियों की तरह। हाँ ये भी बात है भाई, वो साइलेंस सबसे कहते हो रहा था कि तू गुंडों के साथ पली है तो तू गुंडी बन गई है, तू मैनर्स भूल चुकी है। मैनर्स तो आते हैं भाई हमें, अगले की इज्जत नहीं कर रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना हमें मैनर्स नहीं आते। गुंडों का तरह स्टाइल है लोहे का यार। It looks like the Tanakh tried to salvage some supplies after getting attacked. Then dropped them? They're running battle? Maybe they can lead them to the other soldier. क्या हो गया? क्या नहीं आया? प्रंजल नहीं आया? प्रंजल का दूध बात है। Tracks from the missing Tanakh. दूर बात क्या होता है? ये दूध बात। पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई। वर्मा भाई को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे दिखा रहा है, हाँ लड़ तो रहा है कोई वहाँ पे देते हुए। हाँ ये रहा, हाँ चल रहा है। ये ले। By the 10 that lumps made it. I thought we were both finished. लड़की लग रही है, कोई लड़ रही है। मारे हम। मदद भी करती रहनी चाहिए भाई, करती रहनी चाहिए, करते रहना चाहिए भाई। इसका ऐसा ही है, हाँ भाई। We've got incoming. Blazes! How are we going to take that thing down? Damn it! अरे ना मदद तो जाना अच्छी। अरे तेरी ये ले। अरे भाई अरे भाई अरे भाई शिट शिट शिट। Attack! No time to lose. Yeah. You stubborn fool! You haven't let me down yet. बे भाई, जिन लोगों की मदद करने आए वो लोग आपस में तो हंसी मजाक करे जा रहे हैं। साला मतलब हम हेल्प करने लगे तो मैं तो हंसी मजाक करोगे तुम लोग आपस में। चिल्लाए यार, ऑलमोस्ट डाउन हटा दिया भाई। You did it! I can't believe I'm alive. अच्छा विश्वास नहीं होता तेरे को कि तू जिंदा है?
मुझे पहले चीजें कलेक्ट करने हम करेंगे इनसे बात। Thanks. If you hadn't shown up, I would have been machine grist. All I did was give your friend here a little time to come to the rescue. Ah, you're full of it. I barely escaped with my life on the road. That I believe. I, hope some of your supplies are still usable. Me too. Food's always scarce. The soldiers at the Grove need the rations. No way we can trek back north to Saltbite to get more. I'll get this one back on her feet and we'll scrape what's left of our haul of the dirt. You're making me hungry. Thanks, Outlander. We won't forget what you did. Stay safe, both of you. दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू। I bet a cook can do something with this. Getting steeper, air's getting cold. Should be getting close to Stonecrest. वाह क्या बत्ती जलती हमारे बैल में, देख रहे हो लोंडो? वाह कितना सुंदर लग रहा है भाई। ऐसी रोशनी भाई, अगर मेरे पास गाड़ी होगी ना तो कभी ऐसी रोशनी लगाऊंगा, लाइट यार रोशनी कह रहा हूँ, चलाना कटवा लूँगा अपने अलोय को, इसलिए तो बोलता हूँ ये बैल वैल कभी रोड पे लेके मत चलिए इंडिया की, इंडिया गया कहीं पे भी चलान कर जाएगा। मस्त लगता है भाई, ये लाइट जलती रहती है इसमें। तू जान तू क्या बीएमजी भाई, आपका फैन पेज बनाऊंगा तो एक मीम बनाऊंगा आप पे। क्या एनपीसी कह रहे हेल्प मी, बीएमजी भाई कह रहे रुक जा पहले चीज़ें कलेक्ट करने दे फिर हेल्प करूंगा। बीएमजी भाई इस गेम की नाइट स्काई मस्त है, सब कुछ ही मस्त है। ओ भाई ये सीन देखो लोंडो, ओए पहाड़ी पहाड़ भाई साहब, ओ भाई ये स्लाइड भाई स्लाइड भाई से, ये तो देखो सीन लोंडो पहाड़ी पहाड़ भाई साहब कैसे, उफ तेरी अदा। दिल तू जान तू, यहाँ पे कलर्स आ गए थोड़े। Oh यार रात में पहाड़ हो गए। This must be Stonecrest. Cthulhu should be waiting for me, but maybe I should look around first. Return to me another time. ये सूट पे नहीं, फटे सूट नहीं होता, सफेद सूट होता। सफेद सूट पे ओए 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 दाग पे गए। As I was saying, my blade is ready. वाह क्या सीन है। होराइजन जीरो डॉन रीमास्टर खेली थी हमने, लोग रीमास्टर को गालियां दे रहे थे कि अरे रीमास्टर वर्जन क्यों बना दिया। मेरे को भी पहली बार लगा था, मैंने खेली नहीं थी, बट मैं गालियां नहीं देता भाई बिना खेले, बट मैं शौक हुआ था यार रीमास्टर वर्जन क्यों बना दिया, ओरिजिनल गेम इतनी अच्छी है। बट जब रीमास्टर हमने स्ट्रीम पर खेला और खत्म करा लोडो, ओए हो इसमें जो कलर्स ऐसे चेंज हो रहे थे ना, नाइस भाई। और ये गेम तो पूरी ही कलरफुल है फॉरबिडन, बट होराइजन जीरो डॉन को रीमास्टर करके जो उस गेम में कॉन्सेप्ट डाला ना इन लोगों ने, ब्लैक एंड व्हाइट हो रही थी, मस्त लग रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं हो रही थी, तो थोड़े कलर फेड हो रहे थे, मस्त लग रहा था।
क्या सीन है? This valley is infested with Regala's rebels. The scouts from the village tell us that they've been moving machines through here for days. Some they ride, others they herd along, and some they even strip for parts, especially cannons. The path ahead will not be easy. We should get going. My orders are to guide you to the bulwark so that you can speak to Tekote, for all the good it'll do. Not so fast. I'm gonna need a little more than that. क्या चूज करूं? You were at the embassy. I was. I'm sorry about the other marshals. Their deaths will not go unpunished. You're still healing. I will never heal. But that won't stop me from cracking any skulls that need it. Good thing you're on my side then. स्माइल अच्छी है Aloy की. अरे स्माइल तो कर दे. अच्छी स्माइल कर रही है बेचारी. What is this place? Stonecrest was built as an outpost back when the clans were still at war. Its purpose was to guard the entrance to the valley, as well as keep watch on what happens below. And for now, that means keeping watch on Regala's forces. I wish we had enough soldiers to do more than just look on. Why do you think Regala's forces are driving machines through the valley? We've heard similar reports from across the clan lands. The rebels are gathering machines from the wilds, but whatever control they have over them doesn't seem to last. So they herd them into camps. Something else happens there. Something that makes their control permanent. An override with 2 phases. I don't know about that. But it gets worse. We've heard rumors that the rebels are scouting larger machines. I don't know what kind. Let's hope they don't learn how to override them too. For all the good it'll do? What's that supposed to mean? The bulwark has stood unyielding since the birth of our clan. Behind it, Tekote believes himself to be invulnerable. If he insists on defying Hikaru's orders, an outlander and a maimed marshal aren't gonna change his mind. Your chief seems to think differently. And that is the only reason I am still standing here, talking to you. What makes you so sure Tekote won't listen to us? A snake safe in its lair hears nothing but its own rattle. Come on, is that all you've got for me? Hikaru said you were from the Sky Clan before becoming a marshal. I need to know what you know. Tekote is a petty, vindictive schemer. Ooh. If he had any guts, he would have gone after Hikaru long ago. But instead, he covets the chiefdom from behind the bulwark, biding his time, hoping that his foes will weaken one another. Is that enough for you? For now. What makes the bulwark so impenetrable? It's made of massive boulders, impervious to any frontal assault. No army or machine has ever penetrated it. I am the only thing that can get you inside. If we're done talking, that is. So, what's the plan? The bulwark is to the southwest, so undoubtedly we'll have to cross paths with Regala's troops along the way. We'll either have to fight our way through, or find a way to sneak past unnoticed. Neither will be easy. Never is. Let's get this over with. All right, what's wrong? On me. I don't fight, so I just want to talk.
How would you convince Takote to send his challengers? I wouldn't. Come on. To knock the respect of blade and the strength of the fighter who wields it. How good is anyone who lacks that? Well, lucky for us, we're both good fighters, but let's hope it won't come to that. So this whole valley is the Sky Clan's territory? Yes. The clan has defended it for generations. Against who? The other Tenakth clans. Even the Karja, long ago. If you want a history lesson, talk to the chaplains. When Rebels, you left the lad. Grove, how did you know I'd agree to help Karo? Got them. Don't sneak around. I will follow. क्या क्यूट स्माइल बेचारी स्माइल करके खुश कर रही है बट खुश नहीं हो रहा है। ये कटालो जो भी नाम है। हाँ वर्मा भाई मिडनाइट वॉक का बच्चा तो क्यूट नहीं लग रहा था, स्माइल क्यूट लग रहा है। सही बात बोली। क्या वर्मा भाई उस दिन बोल रहे थे ना शायद क्यूट नहीं लग रहा है ना, वो छोटू को मारे। यल्ले बोल रही है यल्ले देख लो एलोय ऐसे मारती है वर्मा भाई। नहीं सोच रहे हो स्माइल क्यूट बोलूँगा तो एलोय खुश हो जाएगी, बच के रहो। क्या भाई पहली बार तो स्माइल कर रही है एलोय ने। अच्छा भाई पहली बार तो स्माइल करी है एलोय ने, ज़्यादातर गुस्से में ही रहती है, सीरियस रहती है। तुम जैसे लोंडों के लिए रहती है वर्मा भाई सीरियस। वो क्या चूतिया लोंडियों की तरह हंसती रहे 24 घंटे कि लोंडे उन पे चांस मारे। क्या होता है वो गाना, वो हैप्पी एंड माय Those rebels were gathering machine parts, maybe to make more overrides. And Takote won't do anything? Why would he, when he has the bulwark? I grew up behind the wall. It's easy to have a false sense of safety there. More rebels in the clearing. Take the lead. ओ हैप्पी इन माय लाइफ दिल चांस मारे रे। ये कोई गाना था ना पुराना, भूल गया मैं। आते इनको एक करके ए या चार्ज गिरा दिया ना स्मूथली बेटा। या चल शील्ड शील्ड अच्छा सालो जैसा हमारे पास था नहीं खुद पे चल या तो बच गया। चल चल अला ज़्यादा चमक धमक बनेंगे, ज़्यादा लाइटम लाइट बनेंगे। इनका लाइट चमकाना ही इनको मरवा रहा है लोगों, सच में इनका लाइट चमकाना ही इनको मरवा रहा है। कि वैसे तो दिख नहीं रहे लोग, लाइट चमक रही तो दिख रहे हैं। ये लो इसको तीर से मार रहे। हाँ मरा नहीं ये लो गया। गेम का एक कलर थीम चेंज होता रहता है ना, अच्छा लगता है ऐसा। सीरीज तो क्राटोस भाई भी है। अरे उनकी तो बात ही अलग है भाई, वो तो लोगों की लाइफ सीरीज कर रहे थे भाई। बट मैंने तो नोटिस करा है ज़्यादातर जो लड़कियां होती है ना, लड़कियां प्रोटैगनिस्ट होती है गेम्स में, वो सीरियस ही रहती है। एली भी सीरियस रहती थी, एलोय भी सीरियस रहती है, और इनका सीरियस रहना बनता भी लोंडो, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा हो रखा होता है ना। एली के साथ इतना बुरा होता है लास्ट ओवर्स में, ठीक है, इसलिए वो गुस्से वाली बन जाती है। और हमारी एलोय के साथ भी कितना बुरा हुआ, इसलिए गुस्से वाली सी बन गई है। तो इंसान की लाइफ ही उसको गुस्से वाला बनाती है भाई। अब हमारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए तो हम भी गुस्से वाले बन जाते हैं ना, और इनकी लाइफ ही बदल जाती है। ऐसा हादसा होता है। By the time Takote realizes he's outmatched, this entire valley might be overrun. If not for the sake of the rest of the clan, I would welcome that day.
to see his pride ruined. आज तक कुछ ऐसा हो जाता है इनकी लाइफ में इन लोगों की The bulwark. ये सीरियस Let me बनना know when पड़ता you है are ready, and I will announce us. सबसे बातचीत इससे तो पता था ये बजाएगा वो ये क्या है मूर्ति है पत्थर है क्या है भाई You there! A marshal requests an audience with your clan commander. I didn't know there were any marshals left. We defend the path to the mountain, where the wings of the Ten shall find us. All right, Marshal. I'll send the lift for you. वाह भाई वाह लिफ्ट भी बना रखी कैसा When we meet with Dakota, I'll do the talking. ठीक है भाई We'll see how it goes. मैं कह रही देखते हैं कैसा रहता है सब वाओ क्या सीन का भाई गेम है भाई Back again. So this was home. A long time ago. Come on. Come on. You can do better than Your that. enemy is mine. Hurt him. Move it. बर्फ गिर रही है ना बहुत अच्छा लग रहा है What's he doing with an outlander? बातें बना रहे हैं कटोलो है कोटोलो जो भी है नाम है ये यहाँ पे आए हैं बड़े सालों बाद बड़े दिनों में आसपास लोगों की बातें सुनने में भी बड़ा मजा आता है ले गया आंटी को ना आसपास लोगों की बातें सुने Well, this is a warm welcome. An outlander and a maimed marshal. A spectacle. Reminds me of where I grew up. I never decided which was worse, when they shunned me or when they stopped and stared. Right. ये कह रहा है एक आउटलैंडर आउटकास्टर और एक मार्शल साथ में चल रहे We're हैं here for Dakota. Let us in. तो लाइक कह रही तू मेरे को याद दिला रहा है कि मैं कैसे पैदा हुई हूँ कहाँ पैदा हुई हूँ पड़ी हुई हूँ आउटलैंडर आउटकास्टर बोले जा रहा है ना बार बार ना जल्दी भी करते रहते हैं बोल के ना अरे कैसे खींच खींच के खा रहा भाई हिला नहीं है क्या कभी आ गए भाई इसके पास ये अंकल अच्छा The Sky Clan's mighty son returns. Bless the Ten. Your chief has demanded an immediate dispatch of all challengers to the cool route. We're here to make sure yours haven't gotten lost on their way to the grove. I see. Regala must have dealt our chief a mighty blow, if he's sending you two as messengers. This one defeated Regala's champion, Grutta, at the embassy. Yeah. She fought honorably. I had the sense to bar our soldiers from that embassy. Just as I have the sense now to keep our challengers here. If they must fight, then they will fight here. Defending our walls. Our clan. That wall won't protect you. Not from the machines Regala controls. They're already at your doorstep. And what do you know of the battles that the Bulwark has withstood? The blood shed upon stone. I know it wasn't meant to be used as a coward's shield. You were a great warrior once. But that was then. You tell Hikaru, with all due respect, that we will keep our challengers here for as long as we are safe behind the bulwark. I told you, words are useless with his kind.
We're gonna have to kill him. It won't be easy with all his men above. Are you even listening? क्या तू सुन भी रही है? For as long as we are safe behind the bulwark, he said. Wait here. I need to get a closer look at that wall. What? Why? जो भी कर रही है ना लो करने दे। बोले जा रहा है क्यों क्या? What are you up to? बोलता रहा है हम तो जाते हैं पास से देखते हैं वॉल को। That wall might not be as strong as Dakota thinks it is. I need to get down to the base of it and check it out. ये गेम पता है मेरे को क्यों अच्छी लगी थी होराइजन? इसी बात से अच्छी लगी थी जो इसमें आदिवासियों का और जो टेक्नोलॉजी का मिक्सअप है ना वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। होराइजन ज़ीरो डॉन खत्म करते ही मैंने तुम लोगों से कह दिया था होराइजन फॉरबिडन थोड़ी अलग होने वाली है, एलोय पे होगी पूरी, तो थोड़ा तुम लोग रेडी रहना। थीम सेम रहेगा बट स्टोरी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, मतलब अब कुछ एलोय करेगी। करनी एक चीज़ होगी पर बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, और वही हो रहा है देखो। किन लोगों से मिलना पड़ रहा है। Just what I thought. There's something metal in there. Oh, that rock is interfering with the scan. I need to get closer. How? ये पास जाना पड़ेगा बट कैसे? Climb up on the left side of the wall, near that waterfall. एलोय बता रही है लेफ्ट साइड से चढ़ती हूँ तो चढ़ पाऊंगी। एलोय मेरे को पता है तो कहाँ से चढ़ाना है। बाकी लोंडो इंस्ट्रक्शन देते ही हमारे प्रोटैगनिस्ट हर गेम में, तुम लोग पता ही है। Water's flowing into the wall, towards a hollow, maybe. Rocks here might give way. I'll pry it open. देखिए पानी आ रहा पर कहाँ से आ रहा? Scan that tank again. तो दोबारा स्कैन। I'll bet if I blew it up. But how? Well, can't do anything else here. Better go find Katalo. पटोला से बात करनी है, पटोला से, पटोला ही नाम रख देते। Said you've been scurrying around the wall like a rat. What in the name of the 10 have you been up to? Dakota said he wouldn't send his challengers as long as they're safe behind the bulwark, right? Don't remind me. So, we take it down. Did you hit your head on the way down here? I'm serious. There's something from the old world stuck in there, and it has a power cell. I could blow it up if I just penetrate the first layer of rock and metal. Even if what you're saying is true, it would take a cannon to do that. You're right. And you said the rebels were stripping them off machines back in the valley. Come on. No. I'm not getting dragged further into this madness. Hikaru ordered you to help me. You gonna defy him like that arrogant shit up there? That was an unkind comparison. The rebels might have made camp northeast of here. And then what? The two of us go up against all of them? Pretty much, yeah. Oh, you may lack sense, but you don't lack courage. So, back there with Dakota, it seemed like there's bad blood between you two. There is. If we make it through this plan of yours, perhaps I'll tell you. I'll hold you to that. We're getting close to where we saw the rebels before. Well, it looks like the rebels just got a lot more firepower. Ready?
Move out! ओ भाई अरे भाई साहब तो हाथी है भाई रोबोट वाला हाथी अरे भाई You wanted your cannon, and that thing has him. This won't be easy to take down, especially with this. I'll handle the big guy. You focus on the others. I'll follow you in. Maybe I should see if there's anything I can use to take that thing down. My focus can help. Load up, Fire's wasted squad! on that machine. Soon we march! The Sky Clan will fall! म्यूजिक बज रहा है मस्त था पीछे ये क्या बेस लग रहा है पता है हम अपनी प्रोटैगनिस्ट की बातें सुन लेना वही काफ़ी होता है लोगों से पता चल जाता है मैं कहाँ चढ़ना है कहाँ नहीं चढ़ना है तुम लोगों को मैं हर बार ही बताता ही हूँ मैं चुप रहता हूँ चुप होकर सुनता हूँ मैं कहीं पे भी जाना होता है लोग पहले बता देती है ये अल्लाह पहाड़ पे चढ़ा रहा था तो वाले बोले जा रहे थे यहाँ से चढ़ूँ तो बोल रही कैसे फिर मैंने पास लेके गया पहाड़ के तो बोलने लगी लेफ्ट साइड से चढ़ना चाहिए अच्छा तो मेरे को दिख ही गया था लेफ्ट साइड से चढ़ना चाहिए बाकी पानी आ रहा था बोल रही थी कहाँ से पानी आ रहा है तो ले गया अंदर ही ये अल्लाह म्यूजिक मत बज रहा पीछे उनको पता है हम इधर है वे उठाती कैसे है पता चलता है सामने से उठ नहीं रहा है ये क्या बेटे तू गया आती हो तू कुछ भी हो दुनिया के लिए होगा तू आती अरे बात 4 वॉचिंग हो गई क्या आपसे कुछ कहना था मैं लाइव नहीं देखा रियली सॉरी पर मैं रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम देख लेता अच्छा हूँ मेरा भी मन होता है कि लाइव देखूं पर कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से नहीं देख पाता हूँ सॉरी प्लीज़ आप गुस्सा मत होना प्लीज़ भैया अरे कोई बात नहीं भाई नहीं हो रहा भाई मैं इसका बट स्ट्रीम आधी छोड़ के मत जाया करो जब स्ट्रीम पे आते हो तो देखा करो पूरी स्ट्रीम जब आते हो स्ट्रीम पे कोई भी तो पूरी देख के जाया करो आधी छोड़ के मत जाया करो बस आए हो तो पूरी देख के जाना ताकि आज हम देर तक स्ट्रीम करने वाले हैं क्योंकि आज पूरा दिन स्ट्रीम करी नहीं और कल ये गेम कंप्लीट करनी है हमें ये अल्लाह किसी एक स्ट्रीम में तो आकर लाइव देखा करो सही कह रही है पलक क्योंकि चैनल डेड हो चुका है डेड ही हो चुका है चैनल हमारा क्या मैं दिन की स्ट्रीम देख सकता हूँ पूरी तो दिन वाली स्ट्रीम में आ जाया करो भाई फिर मैंने बोला तो है किसी भी एक स्ट्रीम में आ जाया करो और दूसरी स्ट्रीम में भी आ रहे हो तो आ सकते हो भाई कोई भी स्ट्रीम में आ जाओ जब तुम्हारे पास टाइम हो बट जब भी आ रहे हो तो पूरी देख के जाओ मान लो रात वाली स्ट्रीम में आ रहे हो तुम्हें सोना है कोई बात नहीं आए तो ना आधी से ज़्यादा तो देखी ना सिंपल हो गया Here. I may be maimed, but I've still got a strong back. After you.
You fought well back there. I did not think we'd survive. But killing the rebels and the machine, it was good to take the fight to them for once. You really think this thing will do the job? Not soon enough. क्या आप लोग ही अब शेयर करके पहुंचा सकते हो क्या? हाँ दीदी, देख लेता हूँ मैंने अपने दोस्त को भी भैया का चैनल शेयर किया है। गुड, आप लोग ही अब शेयर करके पहुंचा सकते हो लोगों तक कंटेंट, क्योंकि अब यूट्यूब से उम्मीद रखना बेकार है। यूट्यूब नए लोगों तक स्ट्रीम इसलिए नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है वो देखते ही नहीं है। यूट्यूब डेड बिकॉज ऑफ सब्सक्राइबर्स। सही बात है। Snow's melting on my clothes. Great. चैनल डेड लिखना चाहिए तो यूट्यूब डेड नहीं। Here it is. But you don't just need a cannon. You need a miracle. Coming right up. Okay. Gotta blast away some rocks. To expose the power cell. It's working. Yes. काम कर रहा है। कुछ नहीं फूट रहा है यार पर। ओके, कट सिंपल हो गया। नहीं हुआ कुछ। This isn't gonna work. Well, isn't this impressive? 2 children playing siege. मजाक उड़ा I रहा hope है। they haven't hurt the bulwark's feelings. Come now, stop embarrassing yourselves. And leave this poor mountain alone. This is your last chance, Takote. You can still answer Hikaru's call. This is your last chance. You have it backwards. Leave this place, savage, now. And take this cripple with you. और लो भाई, बड़ा भी मजाक उड़ा रहे थे। बगे कैसे बग रहे हैं भाई साहब। अभी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे 2 बच्चे वो मारा मारी खेल रहे हैं, बस शिकारी से खेल रहे हैं 2 बच्चे। हमें 2 बच्चे बोल रहे थे साला। असलिया एलोय खुश हो रही है। फट गई आंट। अब बोल क्या बोलेगा बेटा? हिला दी ना पैरों तले जमीन। Can't hide behind the wall anymore, Takote. Now you have to join Hikaru. दीवार के पीछे कुछ नहीं छुपा सकता तू। Never. We will rebuild it. अच्छा? Immediately. You are not safe. The bulwark couldn't protect you from a single cannon, let alone an army of machines. The only pathway to safety is to unite against Regala with your chief. You decreed that no challengers would be sent, while the clan remained safe behind the bulwark. So send them now. Unless your word means nothing. Send them. I didn't hear you. Send the challengers. I look forward to seeing the Sky Clan's colors in the arena. Nicely done, Marshal. Into this place. They'll have to live without their wall. But that's better than living apart from the tribe, as pawns in Takote's foolish schemes. If you want to check up on them, talk to Jera, the chaplain of the clan. If anyone needs help up there, she'll know.
Yeah. Maybe I will. I'll take my leave then. I need to report to Hikaru. I'll see you at the culvert. Good. We may need another miracle there as well. Guess I'll have to do some exploring to find the parts I need. Maybe I should go up there, see if everyone's all right. And find this chaplain, Garah. Might also be a good idea to resupply before I head back out. क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं वर्मा भाई? यूट्यूब अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? यूट्यूब रिकमेंड करता है सिर्फ फ्री फायर या बीजीएमआई को, क्योंकि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी इस गेम को सपोर्ट करती है, कभी अच्छी गेम रिकमेंड नहीं करती। वर्मा भाई क्या बोल रहे हैं? बीएमजी भाई आलिया दी तो पीछे पड़ी थी, वीडियो अपलोड करो, बट वीडियो पर ही व्यूज नहीं आए, क्या करें फिर? Is this a training pit? It is. Sounds like you've been to one of the other clan's capitals. I'm Arayo. My brother Varrock and I run this training pit. We watched you bring down the bulwark. Made our day to see our arrogant commander so furious. Anyway, if you've been to another clan's training pit, then you must know the drill. Same rules apply here. You can train or take on a challenge. Only your spear and a practice bow are allowed in the pit. Complete all of our challenges, and you can spar with us. And when I beat you, I'll earn a mark? If. And yes, a token of victory to present to the Enduring. Who is this Enduring, exactly? All I've heard is that they're the best trainer amongst the Tenakth. Earn 3 marks. Then you'll see. You can't win a battle if you're dead, and distance will keep you alive. This combination gets you out of trouble and punishes your enemy. Survival on the battlefield is down to tactics. Your best target isn't always the closest, so select your target and strike. To really hurt a defensive opponent, use a block breaker. Then chain it into an attack using a half-moon slash. Make a fight of it! Defense, attack! You alright? When did she learn that? Are you injured? You have to win your mark. Use your blade. Excellent work. Good. Combinations. Brother, I can fight. Not? Good. Fight on, brother. Good combination. Did you teach her that? Good work. Excellent combination. You have skill. Good. Not bad. My blade shall conquer. Have courage. Fight. Learn. Good. Blood of the 10! We yield!
Damn it! अरे 7 वॉचिंग, अरे भैंचो 7 वॉचिंग कैसे आ रही है आज? Damn, you're tough. I think Varrock might have even cracked a smile. Here, you've earned this mark. Thanks. 2 marks, 1 more to go. And then the enduring. Most never even get this far. Good luck getting your final mark. And let me know if you want a rematch, another challenge, or more training. You'll always be welcome here. I'm done with the pit for now. Until next time, then. आपकी कोचिंग कंप्लीट कर दी? अच्छा भाई तुम कर रहे हो? अरे यार थैंक्स भाई, थैंक्स, थैंक यू भाई। भाई आते तो धमाल मचा देते हैं, ढेर सारी वॉचिंग लेके आते हैं एक साथ। बट यार ओरिजिनल वॉचिंग चाहिए ना मेरे को। तुम लोग ही अपने अपने फोन से देख रहे हो उस चीज का फायदा तो है वैसे, बट पैसे फायदा नहीं है ना। वहीं पे और लोग देख रहे होते तो अलग बात होती। कोई ना, बाय द वे थैंक्स। Once it's done, I'll be able to access the chamber below Hikaru's throne. And Ether. Outlander, the chief awaits you in the arena, past the throne. सच में 7 लोग देख रहे होते तो अलग बात होती यार। 7 वॉचिंग पता नहीं कितने साल आने में This लगेगी must भाई। lead to the arena. It's another part of the ruins, turned into a fighting ring. चलो इससे आगे बात करनी है, करते हैं। They know a battle is coming. Aloy, it seems you've had to move mountains to bring the Sky Clan to heel. Literally. Katalo helped. Yes. Takote reprimanded for all the clan to see. You both served well. But now the cool route is at hand. Some have come to compete, others to bear witness. They know Regala will come for me. I'll do whatever it takes to hold up my end, as long as you remember yours. So what's the plan? Katalo. There are only 2 viable ways to attack the arena. Through the throne room you just passed, and by the trail on the north end. We've set up barricades at both. But if Regala means to assault the cool route with machines, she will have to attack by the trail. You will join our defenders there. Hold the line, and I'll have my marshals. You will be free of my service and receive your reward. Make whatever preparations you must. Once the cool route begins, you must see it through. The grove, the arena, it's all part of the same ancient structure? Yes. Here the land remembers the sacrifice of the 10. Their deeds commemorated for eternity. Sacrifice? The visions tell us that on the ground below, they gave their lives in a fight against machines. We honored them by holding the cool route where they fell. What exactly is the cool route? Where once the clans fought each other, now we fight as one, against the machines. That is my law made manifest in the cool route. Each clan must send contestants whenever I call for the ritual. These challengers face trial by combat against machines in this arena. Those who distinguish themselves become marshals who bind the tribe together as peacekeepers. I know where I'll be. What about you two? I will be here with the chief, where I belong. Should the fight reach us, we will take the blood owed for our fallen. If it comes to that, the defenses will hold. Let's get this over with. Good. You'll find Dekka at the north barricade with the rest of our defenders. Strike true as the 10. I'll see you when this is done. There's armor in that chest. Take it. It might prove useful.
अबे एक वॉचिंग दिखा रहा है भाई मेरे में। भाई ने तो भी वॉचिंग बढ़ा दी थी, पता नहीं भाई। यूट्यूब भी तो अलग नशे करता यार। जितने दोस्त हैं मेरे उनसे मैंने कह दिया है कि आप आपके चैनल के बारे में। थैंक यू भाई। Gone against Regala. You're watching history. Celebrate skill and courage today. My strength is yours. We won't! Today will be a great victory. Mr. Cote, these thugs, of course. Look, comrades. Easterner. Didn't think the Sky Commander himself would be joining us today. If there's a chance my challengers will be facing Regala, it is only right their commander join in their fate. Or maybe you need to save face after what happened at the Bulwark. Careful now. Sometimes sharp wits bring out sharp spears. I'd save my spear for Regala's troops, if I were you. Those defenders should be at the end of this trench. But we must hold. And look, we are not alone in this fight. कोशिश कर रहा हूँ भाई अपने दोस्तों से। बहुत कहा है जितने दोस्त हैं उनसे, और छोटे बच्चों से भी बोलो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं बावले और उनके पास होता है टाइम। Focus on the machines. Take them down. And Regala's forces become no different from our own. Yes, Chaplain. Watch each other's backs. Dismissed. Our soldiers are ready. They will defend the cool route from below. But from above... Not bad. Where did you get it? One of our squads ripped it off a fallen machine. The honor is yours. Regala may have her tricks, but you will show her our teeth. The cool route is upon us! Our struggle demands new blood! New leaders! Release the quarry! Challengers, approach! All who take down a machine shall be named Marshal. Remember the 10. Strike from the air as they did and seize your glory. और भाई साहब, ओ भाई
ये अबे ये वाली गन चलाने में ना मजा आता है। ये क्या बात चल रही है यार, मुझे जाओ लाइव चैट पढ़ता हूँ क्या। बट छोटे बच्चों से भी बोलो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं बावले और उनके पास टाइम होता है, इसलिए वो लोग पावर की तरफ सपोर्ट करेंगे। वो तो आप सही कह रहे हो, आप ज़्यादातर फ्री फायर वाले हैं। क्या मैसेज है, आधे दूर के दिख रहे हैं। अच्छा सपोर्ट करेंगे, बट पलक दी दिक्कत तो ये है ना कि छोटे बच्चे चूतिया चीज़ें देखते हैं और बस टेक्नो टट्टी और फ्री फायर वाली बच्चों देखते हैं। वो तो आप सही कह रहे हो, आप ज़्यादातर फ्री फायर वाले है, ये सब उन्हें पसंद नहीं है। उनसे भी कहूँगा, छोटे बड़े हर तरह के लोगों से कहो, मोहल्ले वाले और स्कूल रिलेटिव। जैसे किसी बड़े का मोबाइल मिलता है, मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ किसके मोबाइल से, तो कितना भी कहूँ डिपेंड उन पर करता है। सही बात है यार, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है यार। सब्सक्राइबर तो ऑलरेडी है मेरे यार। बट सब्सक्राइबर से नहीं होता ना यार, लोग सपोर्ट भी तो करें ना। इतना भी हूँ डिपेंड तो उन पे करता है। सही बात है, वाली गन फिर मिल गई। हाँ भाई क्या कुणाल, तुम्हारे 2 सब्सक्राइबर कम हो गए? मैंने तो बोला ही था, जो लोग गेम की वीडियो पर क्लिक नहीं करते वो दूसरी वीडियो पर क्या क्लिक करेंगे। एम जी भाई आलिया दी तो पीछे पड़ी थी, अपलोड करो वीडियो अपलोड करो, बट व्यूज़ ही नहीं आए, क्या करें। दीदी 2 सब्सक्राइबर मैं बढ़ा देता हूँ आईडी लॉगिन करके। अरे भाई अच्छी बात है यार, तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बट वही है ना, दूसरे लोगों को भी पता चले ना। एलोय कह रही मुझे नहीं पता, कह रही है ये क्या। अरे भाई अब क्या बवाल चीज़ आ गई। भाई ये सांप साला, अरे भाई अरे तेरी कल्ली की उठ जल्दी उठ।
Regala went after Hikaru and Katalo. I gotta get to them. Champion, get to the chief! Go, get to the chief! In the throne room. अरे भाई ओ भाई कैसे बच के जा रहे हैं लोग दोनों ही बच गए This isn't finished! I'll be back with everything I have! And all who stand with Hikaru will be run red. At attention. You fought well. Proved yourself against enemies both metal and flesh. I name you all Marshal. Your first order is to secure the arena from any remaining rebels. Go. I failed. I should have finished Regala. But now she'll be back with more machines. Stronger than ever. I'll do what I can to help. No, you've done enough. Far more than our bargain called for. When we first met, you spoke of your true mission on which all depends. I wasn't certain if I believed you then. But I believe in you now. So leave me. And get to your task. What will you do? Tend to the wounds. What you need is there. Take it. Your deeds today will be remembered like those of the 10. एक लाइफ और फिर 10 लाइफ कंप्लीटेड यार 10 लाइफ की जगह 10 वॉचिंग आ जा रहा है 5 वॉचिंग यहाँ पर थी भाई 10 वॉचिंग तो बड़ी बात है यस आ गए नीचे हम तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा गाय ने हमें अलग अलग लोकेशन दी थी अलग अलग फंक्शन की कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर है तो हम वही फंक्शन पता करने में लग रहे हैं तो ये दूसरा फंक्शन हमारा Yes. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Restoring ether subordinate function to original code. बार-बार बताने की जरूरत है नहीं तुम लोग सारे एपिसोड देख रहे हो तो तुम लोग पता ही है ठीक है जो भी हमने रिसेंट एपिसोड स्ट्रीम करा था एपिसोड 2 उसमें तुम लोगों को पता ही था तुम लोगों ने देखा ही होगा मतलब तुम लोगों को पता ही होगा तुम लोगों ने देखा था कि उसमें हमें गाया बताती हम गायों को एक्टिवेट करते हैं तो कि अलग अलग फंक्शंस एक्टिवेट करने पड़ेंगे पहले ठीक है एफएटीज को एक्टिवेट करने से पहले अब उससे कहाँ पर तो वो लोकेशन बताती है कोई डेजर्ट में पड़ा है कोई वहाँ पे पड़ा है तो हम चूज़ करते हैं हम एथर को एक्टिवेट करेंगे तब हमारे फोकस में वो लोकेशन भेज देती है Aloy, here. Let's talk. हाँ आ रहे हैं आंटी आ रहे हैं बात कर रहे हैं जब से हम फंक्शंस को एक्टिवेट करने में लगे हैं visions throughout the grove are different now. And this one, it just appeared. Is this your doing?
visions have changed. Oh. That's the one that inspired Chief Hikaru. More testimony of the old ones. Hear now the words that reunited a people. Following the tragic events of the war, Anne Faraday, the chief architect of the reconciliation effort, addressed a nation in need of hope. If we look into the future, the lens of the recent past, our fears loom. Wars waged against machines, scarcity of food and water, storms that drive us from our homes. But true courage means facing those fears with conviction instead of cynicism. Leading the peacekeeping effort with these brave men and women, these marshals of the new Southwest, has strengthened my conviction that when we are united, we can overcome any threat. Join me. Join us in that conviction as we strive for a nation and a world without want or war. Reporting for duty, Commander. Yeah. I'm coming with you. But Hikaru needs you. Because of you, he has new marshals. And a rallying cry the clans cannot ignore. So I will stand with you on your mission. Give whatever is left of my life. It is what I choose. How can I say no to that? So, there's someone who wants to join us. I need you to meet him in the foothills and guide him the rest of the way. Okay, से बात कर रही है. बात कर ले. Go to the mountains, west of Plainsong. A friend of mine will meet you on the ascent. I'll join you when I can. A friend of yours? Should be interesting. पक्का नहीं हमारा साथ देगा लोंडो सच में. ये कह रहा मैं तेरे को ज्वाइन कर सकता हूँ तो अलोय कह रही मैं तेरे को मना कैसे करूँ. तो अलोय ने फिर जू से बात करी फोकस पे. कह रही I need to get ether back to Gaia. Seems like capturing it did something to the other holograms too. Might be worth checking out. मैं बोल दूँ अलोय. मुझे पता है मैं क्या करना है अलोय. पता है मेरे को. वही कराने जा रहा हूँ अलोय. हाँ तो अलोय ने फिर जू से बात करी तो जू से इसने कहा कि कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो तू उससे वहाँ पे मिल ले. ठीक है माउंटेन के पास. ठीक है उसने कह दिया जू ने. ठीक है जो ने तो ठीक है मैं मिलती हूँ. इसने बता दिया अलोय ने. Denied. The truth of the visions revealed. I doubt you have enough skin to mark all your deeds. We'll just have to remember them then. Well, thanks to you, the chief still lives. And hope remains. But that's not why I wanted to speak with you. I need a favor. A personal one. My grandson, Kavo. He was not counted among the dead, which means he must still be with Regala's remaining forces. He was taken prisoner? No. He joined them willingly. Oh. Like many young soldiers who seek to mark their skin with distinguished deeds. I must search for him. Convince him to come home. Chief Hikaru cannot spare any soldiers for this task, so my blade is alone in this. Unless you'd be willing to join me. I know it is much to ask after all you've done for us.
but Cavo is the last of my blood. If Cavo joined Regala's rebellion of his own accord, will Hikaru let him back into the tribe? The chief knows the value of mercy and the toll of unending bloodshed. It's the rest of the tribe I'm more concerned about. They won't quickly accept someone who betrayed them. Even with my support, it won't be easy. But you have to try. I'll help you find your grandson, if I can. Where do we start? A while back, our scouts reported Cavo's squad left one of Regala's outposts in the hills to the south. His squad never returned, but the scouts also spotted one of our own being held captive there. So we'll start at the outpost. If we free the prisoner, maybe they'll know where Cavo's squad went. Shall we head out? Let's go. Good. This way. The outpost isn't far. ठीक है तो लोंडो इसने जू से बात करी, फिर जू ने कह दिया ठीक है मैं करती हूँ, मैं मिलूंगी उससे जिसको तू ज्वाइन करवाना चाहती है। तो फिर इसने पटोला से कह दिया, पटोला से जो भी है अंकल का नाम, कि तू जा वहाँ पे माउंटेन में मेरी दोस्त मिलेगी। तो कह रहा ठीक है इंटरेस्टिंग होगा। और बाकी आंटी का क्या सीन है, आंटी से हमने बात करी, मुझे पता था आंटी हमसे पर्सनल मदद मांगेगी, इसकी शक्ल देख के पता चल गया था मेरे को। तो आंटी ने बताया कि इसका एक पोता है जिसने ना अपोजिट साइड की गैंग ज्वाइन कर ली है। Then we'll have to give them one. Oh, the bloodshed won't end until Regala is defeated. मैं बोल लूँ तो उसने अपोजिट साइड की गैंग ज्वाइन कर ली। What matters is the soldier they took captive, Mikala. She's been their prisoner for some time now. She's my only lead to finding Cavo. We'll get her back. And then Cavo too. अबे भाई बोलने दो भाई मेरे को यार, तुम लोग आपस में बातें करते रहते हो। तो फिर तो मैं बोलता हूँ तो लोंडो। You take point. I'll follow. ठीक है आंटी हम लीड कर रहे हैं भाई। हाँ तो मैं बोलता हूँ कहाँ पे था यार, मैं भूल गया। Maybe then the rest will retreat. अबे यार हाँ तो मैं कहाँ पर था यार, कहाँ पर था। हाँ तो ये इसके पोते ने अपोजिट साइड की गैंग ज्वाइन कर ली है। तो उसने बता रखा था कि वो ना उसको उठा के ले गए, वो कैदी बना हुआ है। बट एक्चुअली में रीज़न क्या निकला, इसके पोते ने खुद से अपनी चॉइस से सेलेक्ट करी है वो गैंग, ठीक है, खुद से वो ज्वाइन हुआ है अपोजिट साइड की गैंग में इसका पोता। बट इसने आंटी ने क्या बता रखा है कि इसको उठा के ले गए थे, इसके पोते को मतलब, ठीक है। तो हमें छुड़ा के लाना है इसके पोते को, ठीक है। और बाकी इसने बोला कि वो चीफ स्वीकार नहीं करेगा बिल्कुल भी मेरे पोते को, क्योंकि जो भी धोखा दे देता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करता है हमारा चीफ। ऑब्वियसली बात है भाई, दूसरी गैंग जाके ज्वाइन करेगा तो कौन स्वीकार करेगा वापस से। अरे मैं भी नहीं बना सकती हूँ चीफ को। तो ये एलोय ने कहा तू ट्राई तो कर सकती है ना, हम तो छुड़ा के ले आएंगे, लेके ले आएंगे, मतलब लेके ले आएंगे, जाके ले आएंगे। चल अरे तेरी बाकी पटोला तो गया भाई ज्वाइन करने हमारी गैंग में, एक और मेंबर बढ़ गया हमारी टीम में। बट साला वो बातचीत ऐसे करता है, ऐसा लगता है जैसे धोखा देगा। अब बोलने का स्टाइल ही ऐसा है यार। ठीक है तेरी दोस्त भी है तो फिर तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो क्या मैं अकेला समझ रहा था, बट ऐसा ना हो कहीं दो। अरे अरे कैसा मुंह बना रही है लोग, लगा है ना भाई वो तीर लगा है इसलिए तो वैसा मुंह बना रही है वो। कहीं ऐसा ना हो कहीं वो हमारी दोस्त को मार दे जू को। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ धोखा देगा, बट पता नहीं ना नोडो, गेम में कुछ भी हो सकता है, लाइफ में लोग धोखा दे जाते हैं भाई। ये गया आके हमने तो बता दिया भाई, जू संभाल लेगी भाई, जू से मिलने भेज दिया मैंने। धोखा ना दे तो अच्छा है। That's all of them. Our scouts said they saw Nakala tied up at a wood post. Let's look around. पता है लोंडो, ये जो चीज़ मैं करता हूँ ना, ये चीज़ करना मुश्किल है। तुम लोग कहोगे BMG भाई गेमिंग करते हो और क्या करते हो, मतलब भाई मैं वैसे नहीं करता दूसरों की तरह कि अपनी गाया जा रहा हूँ, ठीक है, बोले जा रहा हूँ कैरेक्टर्स की बात सुनने नहीं दे रहा।
मुझे कैरेक्टर्स की आवाज़ भी सुनानी होती है और अपनी भी आवाज़ सुनानी होती है, ठीक है, ताकि तुम लोग गेम की कैरेक्टर्स की भी बात समझ सको, मेरी भी समझ सको। और अपनी गेमिंग स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है भाई, गेम प्ले पे, कि बिगड़े ना कुछ भी। इन तीन चीज़ों पे There, Damn that's the heat. post. No Nakala, obviously. But maybe the rebels moved her. I can look for tracks. इन तीन चीज़ों पे एक साथ ध्यान देना पड़ता है मेरे को। There. Tracks leading away from the post. Where do they go? There's rope. Just enough to bind someone. Blood. From the rebels or Nakala? रेबल्स का ब्लड है या फिर नकाला का ब्लड है? नकाला वाला। Dead end. No. I think there's something under that wood. कुछ तो इंटरेस्टिंग है वहाँ पे। ये कट सीन प्ले हो गया, हटाते ही है। Take my hand, Nakala. ये रहा नकाला वही। Steady now. Where am I? Chaplain? Is that you? And with an outlander. Whoa. How'd you end up down there? Rebels had me strung up. They thought I'd give up intel about lowland squad movements by letting me bake in the sun. Managed to slip my bonds and make a run for it. They made me pay for that. Last thing I remember was a crack on the head and the taste of dirt. How'd you end up here? We're looking for Cavo. His squad was last spotted leaving this outpost. Yeah, he was here. It was his squad that attacked us on the road. My comrades got away, but I was taken. Cavo tied me to the post himself. If you're looking for him, Chaplain, I'm afraid you'll only find a dead end. His loyalties are clear. Do you know where his squad went? I overheard them mention Fall's Edge. Then we'll pick the search up from there. I'll go ahead and meet you at Fall's Edge, southwest of here. Dekka, if Cavo attacked her squad? No! He's not lost to us yet. We have to find him and turn him from this path. Okay. I'll see you there. What about you? That wound needs to be looked at. It'll scar. I just need to rest a bit, then I'll report into the Grove. I'm telling you, Bloodhair. The chaplain might not want to hear it, but her grandson is a traitor. सही बात है। I guess we'll see about that. तो उन्होंने इसने बताया वो आंटी तो स्वीकार करेगी नहीं कि उसका पोता गद्दार है, पर वो गद्दार है। उसने बताया कि नकाला ने, मतलब कि पोता उसका जो उसने नकाला कह रहा हूँ, ओहो ने, जो भी नाम है उसका, ठीक है, उसके पोते ने अटैक कर दिया इस पे। वो बता रही कि ठीक है, जब भी मेरा ऐसा हाल हुआ तो बाकी एलोय ने कहा कि ये सच बात हुई तो आपके पोते ने अटैक करा है। तो कह रही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम उसको पकड़ेंगे, मेरे पोते को पकड़ेंगे और उसको सही राह पे ले जाएंगे। बट ये नकाला ने बता दिया भाई, इसका पोता भाई एकदम कतई लॉयल हो रखा है अपोजिट गैंग के भाई, और उसने अटैक करा इस पे। उसने बताया कि ये भी बोली लास्ट में कि कोई सुनना नहीं चाहती, बट का पोता गद्दार है। तो गलत बात है लोडो भाई, मतलब अपनी गैंग से गद्दारी भाई, अपनी गैंग से गद्दारी भाई, अपने लोगों पे अटैक कर रहा, बता जरा। और वो उसकी दादी सुनना ही नहीं चाहती है। उसका पोता ये सब कर रहा है, यार इसको पकड़ेंगे, सही राह पे ले जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता उसको हम ले जा पाएंगे लोंडो सही राह पे, क्योंकि जैसी हरकतें कर रहा है ना वो, कहीं हमें मारना ना पड़ जाए उसे, और मार देंगे तो आंटी कहीं हमसे गलत जाए। मेरे पोते को मार दिया, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक पोते को मार दिया एलोय ने। Fall's Edge. Becca should be waiting for me in there. अब वो अटैक करेगा तो हम क्या ही कर लेंगे, फिर हमें भी अटैक करना पड़ेगा फिर अपने डिफेंस में।
Falls Edge जगह मस्त लगती है भाई मेरे को। अब बना रखा भाई लोगों ने। बात करते हैं रोजा। अरे अपग्रेड कर लूंगा मैं। चलो अब चलते आगे। Listen to him. ओ ये रहा। Not a chance. बात कर अपनी He's a दादी से। traitor. देखा से। Decca, what's going on? Aloy, I'm glad you're here. This is Aroke, leader of Fall's Edge. अच्छा अच्छा So अच्छा you've मुझे enlisted लगा the सब chief's होता है। champion in your dull-bladed efforts. You must be Cavo then. My grandson. And a soldier trying to right his mistakes. Or अच्छा trying इसका to पोता lure है us तो बे। into a यही trap. तो बोल रहा था मैं। My scouts caught him, बंद कर रखा है। sneaking around on the outskirts of the village. I wasn't sneaking around. I was coming to warn you. The rebels are planning an attack. They're going to send a machine straight through this village. अच्छा I left my post when I realized what they were planning. You have to believe me. अच्छा Where are the rebels now? कहाँ पर है They were rebels hunting for the machine north of here. I can show you the way. The only thing you'll do is face trial by combat. You betrayed your clan. सही बात Your है तूने chief. अपने क्लैन को धोखा दिया है। Blood and blades will decide your fate. I'll fight whoever you want after we stop the attack. If Cavo is telling the truth, this whole village is in danger. हाँ We have to find and stop these rebels. The rebels built a campfire north of the river, near the cliffs. I can show you the way from there. Okay. Open it up, Aroke. No. I won't give him the chance to escape. वे The traitor stays here until his trial by combat. Then I invoke blood for blood. I will take Cavo's place until he returns. ओ तेरी You're making a mistake, Chaplain. The clan needs your guidance, not the lies of this bare-armed boy. The right has been called. Cavo will go with Aloy. Then I'm going to. If the boy speaks truth, you'll need my blade. ठीक है If he भाई। lies, I'll run him through. I must make arrangements here first. Then I'll bring the boy to the meeting place. Fine. I'll see you there. तो रोंडो इसके पोते ने बताया कि वो रेबल्स अटैक करने वाले हैं, ठीक है। बट मुझे बात पता चली ना तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया रेबल्स का, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ आ गया। बट एलोय ने बोला कि अच्छा अगर ये बात है, मैंने चूज़ करा तो एलोय ने बोला कि अगर ये बात सच है तो हम पे अटैक करने वाले, ये सच बोल रहा है, ठीक है। तो हमें लड़ना चाहिए, रेबल्स को ढूंढना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, मारना चाहिए रेबल्स को, ठीक है। ये गांव डेंजर में है फिर तो, अगर ये सच बोल रहा है तो। हमने बोला तो छोड़ दे, तो कह रहा मैं नहीं छोड़ सकता हूँ उनसे, ये नहीं तो भाग जाएगा, मैं इसे चांस नहीं देना चाहता हूँ भागने का बिल्कुल भी। तो फिर इसकी दादी बोली, डेका बोली कि कोई बात नहीं, तू जाने दे इसको, इसकी जगह मैं रह लूँगी पिंजरे पे। बट वो बोला अरे चापलिन आपकी लीड की ज़रूरत है, आप ही तो हो जो गाइड करोगे हमें। The campfire that Cavo mentioned should be nearby. What's taking so long? They should be here already. Someone's waiting ahead. Rebels. Friends of Cavo's. We're going to have to take them out to get to that campfire. तो डिसाइड हो गया फिर कि No, our orders were clear. We hold this position until वो they हमारे arrive. साथ जाएगा, ठीक है। तो वो बोला कि मैं भी चलूँगा तुम लोगों के साथ, मेरे ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर प्लान रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं लोग Any sign of the enemy? जाने रेबल्स को। चल Okay, here we go then. तेरी का ले ले बेटे तो गया। Were these rebels waiting to ambush whoever showed up? Cavo has some explaining to do. Better wait at the campfire for him and Aroke. रंग बिरंगा दिल हो या ब्लैक एंड वाइट वे।
लिया खड़ा है सर सड़कों पे जाके नाइट में मजनू बन के टुकड़ा गावे। चलो भाई वेट करते हैं उनका यहाँ, और सिंपले हो गया। आ गए दोनों। Found a few of your friends when I got here, Cavo. You're not off to a great start. They must have been out on patrol. I swear on the 10, I didn't know they'd be here. What did I tell you? His lies are an open sore. अरे Better झूठ we बोल रहा है। cauterize it now than let it fester. No! I'm telling the truth. कह रहा मैं सच बोल रहा हूँ, पर तेरे को कैसे नहीं पता? कह रही इसको खोल। As you say. But this is a mistake. अरे तू बोल रही है इसलिए खोल देता हूँ, बट ये मिस्टेक होगी। हम तो भरोसा कर रहे हैं इस पे। Weapon? If you think Just give it to him, okay? We need to get moving. वो कह रहा हथियार भी दे दे। वो कह रहा है अगर तूने सोच रहा तो गुस्सा आ गया भाई। अलोय ने कहा कि दे दे। अरे भाई हम तो लोंडो हम विश्वास तो कर रहे हैं इस पे भाई, ठीक है? ये धोखा नहीं देगा। हमने इसलिए कहा, अलोय ने कहा कि हथियार दे ही दे इसको, तो बुरा मान गया। उसने हथियार मांगा तो उन्होंने कहा चल दे ही दे हथियार। उसने बोला कि लीड कर फिर रास्ते को, कहाँ पे तेरे साथ ही। पहले बोल रहा था पता नहीं मेरे को कि कहाँ पर होंगे वो लोग, कह रहा बट पेट्रोलिंग पे हो गए वो लोग। पहले जा रहा लोंडो में, बाकी मैं तो अपना चलूँगा भाई अपने अंदाज में। Where are you leading us? The rebels are stationed at the nearby cliff falls. I took this path when I left my post. The others won't be expecting anyone to come this way. or they are, and will be skewered the moment we arrive. There's the cliff falls. And there's no one there, as I suspected. Let's just keep going. I don't like this. चलते रहते कोई तो होगा। देखते लोंडो भरोसा करके इस पे। हेलो ये तो भरोसा कर रही है इस पे, ये झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा वो। इसलिए अलोय ने इसके हाथ भी खुलवा दिए और हथियार भी पकड़वा दिए इसे। ये ढूंढवा सकते हैं उन्हें। ये कितना टाइम लग रहा है इन लोगों को आने में? मैं लोंडो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हूँ भाई, हद से ज़्यादा। सीरियसली कभी कभी लगता है ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। सीरियसली देखो ना ज़रा, इतने चढ़ जाता हूँ भाई। मोस्ट वांटेड में भी मेरे को ये दिक्कत आती है, पुलिस वाले पीछे रह जाते हैं मुझसे, वो चले जाते हैं हार मान के। अरे भाई No rebels, no machine. What did I say? Over there, by the falls. है तो भाई लोग वहाँ पे। Blood of the 10. If that thing runs through Fall's Edge, the village stands no chance. ये लोग बोल रहे थे नो मशीन नो ह्यूमन। ले वेंचर। Right here. आ गए। Nothing will stand in our way now. Grab your लोग gear. कह भी रही है इंतजार करो सब दिख जाएंगे। आ गए ना लोग, अब निकालते हैं मैंने। ये खबर नहीं होता चूतियों से, ज़्यादा ही फास्ट हूँ मैं सच में यार। एलोय जो बोल रही है ना ये लोग कर रहे हैं। अरे क्या अच्छा ठीक है एलोय तू बोल रही है तो हम कर ही देते हैं भाई। इज्जत है भाई हमारी, हमारी इज्जत है भाई। ओरा है भाई हमारी एलोय का ओरा। प्लस 9 लाख ओरा भाई। या अल्लाह, अब तुम लोग ये मत कहना 1 लाख कांग गया बाकी का। अरे बाकी का 1 लाख हो रहा और बना रहे हैं ना। गेम खत्म होते होते पूरा 10 लाख हो रहा हो जाएगा, नहीं 20 लाख भी हो सकता है। क्या है रंग बिरंगा दिल होया ब्लैक एंड वाइट वे। वो 2 वॉचिंग आ रही है भाई, 2 वॉचिंग आ रही है। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई बुद्धियाँ बुद्धियाँ फाड़ो भाई, 2 वॉचिंग आ रही है भाई। मजा आ रहा है गेम में तो भाई साहब। 2 वॉचिंग आ रही है भाई, 2 वॉचिंग नाइस। तो कह देते लोग कि गेम बोरिंग है। अरे देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे, और समझोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गेम कैसी है। डिसाइड पहले ही कर लेना है। अरे भाई जब इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स
बिना खेले गेम्स को डिसाइड कर देते कि गेम कैसी है, टट्टी है, बेकार है, अच्छी है, तो भाई ऑडियंस से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं फिर। कहते हैं जैसा राजा वैसी सेना, वही हाल है भाई। ले खड़ा है सड़कों पे जाके नाइट में, अरे तेरी का रंग बिरंगा दिल हो या ब्लैक एंड वाइट वे, ले खड़ा है सड़कों पे जाके नाइट में, मजनू बन के खड़ा गावे, मिट्टी न पावे, ओ तेरे सिर दे चढ़दा जावे, अर्जी दे दो उस दी दरिया गंज दे खाने, अर्जी दे दो उस दी दरिया गंज दे खाने। Cavo, you're bleeding. तेरे खून निकल रहा है। What matters is the attack was stopped. Because of your warning, you saved many lives today. Come on, let's get you back to Falls Edge. चलो वापस चलो हमारे साथ। I cracked some ribs too. Go on ahead. I'll see him back to the village. ठीक है। Okay, I'll let Decca know what happened. डेका को जाके बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तू लेके जा इसे एच पे वापस। ठीक है लोगों, में डेका आंटी का के बताना है इसकी दादी को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना उखाड़ा हमने कितना नहीं उखाड़ा। वैसे तो सब कुछ उखाड़ दिया हमने, ठीक है, ताकि वो लेके चले जाएगा उसको, तो उसे खून आने लगा है। अब वो उसकी तारीफ कर रहा, बताओ जरा उसके पोते की, अरे तूने तो बहुत सारी जिंदगी बचा ली, तेरे लग गई। कह रहा मैंने भी पसलियाँ तोड़ी है वो तो। अरे अरे चल भाई, धोखा दिया था, अच्छे कर्म कर लिए तो सब बराबर हो गया। वो ये भी बात है लोगों, धोखा देता नहीं से पता कैसे चलता कि वो लोग अटैक करने आ रहे हैं ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, सब लिखी रहती है भाई, ऊपर वाले ने सब लिख रखी होती है भाई, कैसे कैसे कब क्या होगा। बट मेरा क्या लिखा ऊपर वाले ने, मुझे घंटा कुछ नहीं पता। 3 leave, only you return. What happened? फिर ये 3 गए थे बस, तू आई है बस। The rebels had a behemoth. Cavo was injured in the battle, but we stopped the attack. हमने स्टॉप कर दिया। Aloy regrets that he doubted the boy. Your grandson proved himself to be honest and brave, Chaplain. He's loyal to the lowland. प्रूफ कर दिया। So you'll release him? पोते ने। He's earned his freedom. But it'll take many more deeds to earn back the rest of the clan's trust. I'll do whatever it takes. आंटी को चिंता हो गई, 3 गए थे बस, वो वापस आई। क्या हुआ एक्चुअली में, लोहे ने बता दिया, फिर तेरे पोते ने कर दिखाया, ने भी कह दिया, लोंडे ने प्रूफ कर दिया तेरे पोते ने कि लॉयल्टी क्या होती है। That's okay. Falls Edge owes you a great debt. May this begin to repay it. Thank you. As soon as you're healed, I have so much to show you. Welcome back, Cavo. वेलकम बैक भाई, चल दिया लो ये तो। चल भाई बेस वापस जाना है मैं, बाकी मैं देख लूंगा मैप पे कुछ काम रह रहा है नहीं रह रहा है। कंफर्म भी आ गए, खोलते डोर। तो लोगों एथर को गाया के पास पहुंचाना था, तुम लोगों को पता ही होगा, हमने एथर ले लिया था बट गाया के पास पहुंचाना रह रहा था, तो अब पहुंचाते हैं। गाया के पास आ गए हैं यहाँ पे हम बेस पे अपने, बाकी ज़ू को देखते हैं। सीख रहे, खेल रहे हैं। Try a gentler touch. And my big sausage fingers don't really do gentle, okay? Bring it back. Trace the line. To your right. Other right. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha. समझ गया। मजा आ रहा है सीखने में। They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music.
Aloy! Erend, you're all better. And you're here. Well, the world only goes on if you can do your thing. We learn fast enough, we help make that happen. You want all the backup you can get, right? We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh friend arrived. Katalo. I heard their warriors drink people's blood. I want to sleep with one eye open. I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. He seems to appreciate the privacy. Looks like you've got things under control. I should get this to Gaia. Right. We'll keep on training. Catch up as fast as we can. I'm seeing glyphs in my dreams already. Well, while you've been off gallivanting around, I've been working with Gaia to find out more about the land gods. So from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. Okay. नहीं दे भाई बंदा बंदी को टाइम स्पेंड आपस में हाँ तू क्या करेगा Oh, and I delivered your message to Talana. She headed for that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. I wouldn't have taught you the song if I didn't like the way you sing it. So you like hearing me butcher Utaru music? I sure don't. You sound like a dying long one. Hey, Gaia? Why doesn't this door have power? At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. In time, that may change. Got it. Aloy, we've gathered some supplies in that chest. Take what you need. The matriarchs would cry if they read this about the... Hey. Hey. A nice place. Well, it's not like I built it or anything. Right. Well, I can see why you had your doubts about bringing us along. It is a lot to take in. But, don't worry. That's nothing I can't handle. Right. How are you settling in? Varl's been helping me get the lay of the land, when he's not getting all tongue-tied. I don't know who makes him more nervous, that Gaia lady or our new Utaru friend. What about the Vanguard? Aren't you supposed to be back east, ordering them around? I sent some of them back to Meridian with a message. I doubt Avad will mind me sticking around to help the savior of Meridian. I see Varl gave you a focus. Well, it doesn't look as fashionable on me, but by the Forge, the things I've been able to see. Granted, a lot of them are bad, you know, the old world ending and such. I'm still trying to wrap my head around most of it, but I never really understood how you were ever able to find my sister back in the Sundom. And now I do. Sort of. It makes me feel like I could be useful, you know? It takes some time, but yeah. I guess you know what we're up against by now. Yeah, I'm not gonna lie. When Varl first told me those bastards come from the stars, I thought he'd eaten too many of those medicinal berries. Yeah, but I've gotten used to seeing impossible things, thanks to you. I just wish they weren't always trying to kill us. Yeah, you and me both. So, you've met our new Tanakh friend. He's, quiet. I thought his people were supposed to be bloodthirsty maniacs. You shouldn't believe everything you hear. Yeah. Well, I guess if you trust him, so do I. So, Talana came by the base? Yeah, more like rushed through. I was hoping she'd stay for a drink at least. Only Carja I've ever met who's any fun. But it seemed like she had more pressing matters to attend to. I gotta go. I'm here if you need anything. रोंडो हम दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे बट दरवाजा खुल नहीं रहा था खुल गया ठीक है तो ये बोली Someone's put some of my stuff in here. किसी ने तो हमारी चीजें रखी हैं यहाँ पे I see you found your room. Your companions thought you would appreciate a private space of your own. Okay. That was thoughtful of them.
वाह भाई हमारे साथियों ने हमारे दोस्तों ने रखा है सामान हमारे रूम में हमारा गाय ने बताया अभी He seemed like a good man. I think he was really looking forward to going home. ने गाय से पूछा पावर क्यों नहीं आ रही है बाकी क्या वर्मा भाई क्या कह रहे हैं भाई मजे में क्या भाई मजे मार रहा है फोकस से सही सीख रहा है हाँ एरेंट मजे मार रहा है मजे आ रहे थे मजे आ रहे हैं उसे सीखने में फोकस Aloy. It's good to see you. I'm guessing you've got a lot of questions? I've been told of our enemy and their intentions. Your friends showed me to the vision you keep in this place, Gaia, and gave me this focus. I don't pretend to fully understand everything, but all I really need to know is where to train and when to fight. Welcome to the team, then. Welcome to the team, man. What are you looking at over there? The others have been helping me decipher the symbols the focus shows me. So, I thought I'd try to understand the weapon you intend to use against the enemy. This Hephaestus, it will be able to make machines that answer to Gaia? Yes. How many? As many as we need. Such power. Has the world ever seen the like? Now that you know who the enemy is, do you have any questions? I'll admit, I find them hard to grasp. From the heavens. And invulnerable. For now. I will leave the strategy to you. I trust you will point my blade where it will cut the deepest. What do you think of our squad? They seem eager to fight. Though I admit it is strange to see a new Taru in the ranks. Farmers don't make for effective soldiers. She seemed pretty effective when she took out the machines that were guarding this base. Interesting. Perhaps I am mistaken. What do you think of our squad? They seem... farmer... She's... interesting. You said the Bulwark was your home a long time ago. That you were part of the Sky Clan. Yes. That's all you're gonna tell me? Fine. As you wish. My parents were killed in a clan skirmish, so I was raised by my squad. As I grew older, I came to be known as an accomplished fighter. Tekote took a special interest in me. I fought by his side against the Karja, and led my squad on a dangerous climb into the Daunt. It was I who opened the gates at Barren Light, from the east side, allowing the Tenakth to raise it. That must have gotten you some attention. Indeed. I was welcomed home as a hero, and I was content. Then why'd you leave? I became a marshal. Why did you leave the Sky Clan to become a marshal? I was sent to the Kulrut by Tekote. Back then, I would have obeyed his every order. I believed in him, like one would a father. I was too blind to see the fear in his eyes. Fear of a rising young warrior challenging his command of the clan. I returned a hero from the battle at Barren Light. But to him, I was only a threat. Never occurred to him that I had no interest in rising above my station. Why did Tekote think you wouldn't be a threat to him if he sent you to the Kulrut? Tekote knew that if I survived the Kulrut, I'd be forced to forsake the clan to serve the Tenakth as a whole. I'd never be allowed to challenge his command, even if I wanted to. After our victory at Barren Light, Tekote spoke to our people, said it would be selfish to rob Hikaru and the marshals of a warrior like myself, even though he knew perfectly well I had no intention of ever leaving. It was exile, guised as an honor. One he knew I couldn't refuse. So I became a marshal, and never looked back. I'm sorry you had to go through that. I am not. Though it pained me at the time,
A marshal is what I was destined to be. When we were at the bulwark, the guard said something about the wings of the Ten. Hikaru also mentioned it at the cool route. Dekka, too. What does it mean? The visions tell us that the Ten flew on great metal machines with wings and leapt into battle from the sky. For us, to imitate this feat is the ultimate expression of martial prowess, and it is why the challengers leap into the arena during the cool route. Many times I imagined it as a child. The feeling of freedom and the awe it must have inspired. What did Chief Hikaru say when you told him he'd be joining me here? You spilt rebel blood at the Grove and helped reunite the clans. There was little more to be said. He understood. Well, I'm honored he lent me his best marshal. At least for a little while. Indeed. I should go. Feel free to check in on Hikaru and your people. Door's always open here. I will. May the Ten walk with you. हाँ वर्मा भाई कह रहे थे एलेंड मजे मार रहा है सही बात है भाई सीख कम रहा है मजे में ज़्यादा मार रहा है चल कोई ना सीख तो है इससे बात करते हैं Wow, this place is starting to come alive. Yeah, and Gaia placed all the data she got from your focus into that archive room. With the focuses you gave us, we'll be able to access it at our own pace. You know, learn and train. And if you need us, we'll be there to fight at your side. Got it. जा रहे हैं लोगों को सीखने Thanks, Varl. ठीक है यार I'm guessing you've spoken with Kotallo? I wanted to pay my respects for those who fell when we were ambushed at the embassy. Told him I'd never seen anyone throw themselves at a machine like he did. He said a warrior shouldn't be praised for fulfilling their duty. For a second I thought I was talking to my mother. Never thought a Tanakh and a Nora war chief could have so much in common. I'm guessing Talana didn't stay for long? You got that right. Makes you wonder what this Amadis guy did to grab her attention. Whatever it was, she didn't tell me. Must be quite a story. I guess she'll tell us when she's ready. How's everyone handling their focus? And we all have our difficult moments. Erend definitely curses the most. But I'm hoping Oseram's stubbornness prevails. How's everyone doing? Just taking it all in. No one snapped their bowstrings yet. How's, training with Cell? You know we really are training. Mostly. Look, she reads glyphs faster than I can already. I'd be a fool to refuse her help. Of course. You guys reading something over there? We just finished going through all the logs you collected back in Nora territory. And All Mother Mountain. It's hard to imagine that my ancestors were trapped inside, without the knowledge from Apollo to guide them. Thanks to Ted Faro. Yeah. I wonder how it must have felt when they were finally free. The world must have seemed so beautiful. Not to mention terrifying. They weren't much more than kids. And they became an entire tribe. Looks like I was wrong about the Zeniths. Their ship didn't explode on its way to Sirius like everyone thought. And we saw how they lied about creating a better future at their launch facility. Guess they lied about what happened to their ship, too. But still, the tribe settling amongst the stars. I couldn't put a single dent in their shields, Varl. That one Zenith almost killed me. That didn't stop you from resurrecting Gaia. Won't stop us from using Hephaestus against them. That's enough. Think you can hold the fort while I'm gone? If Erend stops listening to the same music over and over again, maybe. We'll be fine. Varl looks happy about his training partner. Learning is best done together. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa...
Even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. For now, I must leave the tribe behind. Sounds like you met my friend Talana. Yes. The Karja Huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids. But Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Yeah. She's one of the good ones. Trust me. You've spoken with Kotallo? A few words. Tenakth don't have much use for us outsiders. You must have made quite the impression for him to offer his fealty. So you've been talking to Gaia? Yes. She was kind enough to take me through some of the history of the Old Ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. You've been getting to know Erend, I assume? Of course. Any friend of Varl's is a friend of mine. In this case, a very loud friend. What are you up to? Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the Old Ones. She helped me decipher some of the data you've collected and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. I see you've settled in. Gaia did say this place was built for us, so we could regain control of our lands with her terraforming system. Nurture them like the land gods do Plainsong's fields. It does strike me as odd that a place of life should have so much metal. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here, it is humbling, to say the least, and heartbreaking that such life should be bent on destroying ours. Right, I should probably go. I shall return to our training then. तो भाई सब खुश है, सब अच्छे से टीम वर्क कर रहे हैं। जाते हैं अब काया के पास लौंडो। अरे कोई बात नहीं। Please merge ether with हाँ me. मर्ज कर रहे हैं। Afterwards, I must discuss an important matter with you. वेलकम बैक कर रही है हमारा। थैंक यू यार। चलो भाई एक और सम फंक्शन ऐड कर दिया इसमें हमने काया में लौंडो को। So, what did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Aletheia frequency. Aletheia. That's one of the sub-functions you couldn't detect before. Yes. The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A word of caution, Aloy. It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone or something else. You don't think it's actually Aletheia? I am uncertain. What's SOS? It is an old world code. A distress signal. A desperate plea for help.
Why would Aletheia send a coded transmission on a frequency only the two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire to do so. I am also uncertain why Aletheia would expect that I would be able to detect and respond to its distress signal at all. As far as it is aware, I no longer function. Okay, so either Aletheia is in trouble and sent the message hoping you were out there, or someone else is trying to get us to go to these coordinates, pretending to be Aletheia. That is my conclusion as well. Could the Zeniths be sending the transmission? According to the data I reviewed on your focus, the Zeniths recovered the other Gaia root kernel in the Hades Proving Lab. It is feasible they used it to gain access to my internal frequencies. So, maybe they sent it thinking you'd respond and reveal your location. Possibly. However, the transmission is highly irregular. If they intended to provoke me into revealing myself, I would expect the communication to be more routine. Right. So maybe it's not them then. All right. I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? Ha! No way. I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course it could be a trap. But if it really is Aletheia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. पता है लोग भी चलेंगे हमारे साथ. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. ठीक है. ये लोग ये भी बता के जाते हैं कि हमें क्या अपग्रेड करने की जरूरत है क्या नहीं है, बट फिर भी कुछ फुद्दू यूट्यूबर्स अपग्रेड नहीं करते अपनी चीज़ों को, फिर मरते रहते हैं आगे जाके. भाई गेम की सुना करो भाई, जब ही गेम खेली भी जाएगी और समझ में भी आएगी. पर नहीं, लोगों को तो देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है. Aloy, I was able to unlock another room in the main living area. Okay. Good to know. I'll check it out when I can. चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. बाकी ये लोग ये रहे. There she is. You ready to head out? Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. अरे तो भाई का जोश. भाई का जोश अलग ही है एंड भाई का. एंड भाई मस्त कूल है भाई बंदे. पलक क्या बोल रही थी, एरेंट अच्छा है, शुरुआत से पता नहीं था होराइजन जीरो डॉन में ये इतना अच्छा दोस्त बन जाएगा ये हमारा. वही तो क्या बीएमजी भाई. Distress call had to be up a really steep mountain, huh? कितनी ऊंचाइयों पे चढ़ रही है, करना पड़ेगा भाई, क्या करें. ओ भाई साहब क्या सीन है लोडो गेम में भाई साहब. ये ओबे इसने अटैक करा क्या. हाँ भाई हाँ, ये कोई अटैक कर रहा है यहाँ पे. चुप रहना तुम लोग. नीचे रहो नीचे होके चलो. वो तेरी ये कौन है भाई, इसको मार रही है तू. मार. अरे तो बेंच उनकी साथी लग रही है जो उस दिन नमूने नहीं आए थे. और भाई आम बंदों को मार रही है भाई. ये को पता नहीं कौन है बंदे, बेंचो कौन सी दुनिया से आए साले. गाया ने बताया कि बेंचो ये लोग बहुत दूर से आए, इस धरती के नहीं है. अभी तो बेंचो एडवांस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं लोग एलियन से. बेंचो ओ भाई कुछ हो ही नहीं रहा. मोटा है अल्लाह बेंचो कुछ छेड़ दिया. अब क्या करेगी बेंचो, तो अभी भी जिंदा बहन की लोड़ी. Well, that takes the keg. क्या बीएमजी भाई आपने कंप्लीट गेम की प्लेलिस्ट नहीं डाली. अरे डाल रखी है यार, कर तुम लोगों को बताया तो था. Burl, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. Well, there are obviously more zeniths than we know about. Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. चेक करते एग्जामिन करते इसको.
आसपास की जगहों को भी। Whatever the rebels did, it took down her shield. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. But it's gone now. इसकी लास्ट कम्युनिकेशन फाइल चेक करते हैं। Well, go do बैटलफील्ड को भी स्कैन कर रहे हैं। I'll wait here. यहाँ पे कर क्या रही थी वही तो? Catching snowflakes on. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. ये भी पता चल पाएगा ये क्यों आई है इधर। बाकी बैटलफील्ड में पहले स्कैन कर रहा हूँ लोग। अल्लाह कुछ भी नहीं छोड़ता भाई मैं, जो मिले उठा लो भाई, मार दो मैं। एरन क्या बोले जा रहा है, कैप्शन में लिखा रहा कुछ। Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा बंदे हैं सफेद वाले जैनिथ, मतलब हमें लगा था उस दिन बस वही बंदे हैं, वो सारे आ रहा था मतलब ये करने क्या है सारे यहाँ। Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. यहाँ पे भी एक तो है। Weapon's still hot. हथियार अभी भी गर्म है वो। I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. एरन के पास वापस चलते हैं, इससे बातचीत करते इसने क्या पता लगाया। All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up, all so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Osram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. Do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing that you said could be here? Aloy? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. और से जाके बात करते हैं। राउंड ऑफ हमें नेक्स्ट हम फंक्शन कलेक्ट करना होगा, तुम लोगों को पता ही चल गया होगा, पहले वाला हमने लगा दिया तो बात करते हैं। केस क्यों ऐसे क्या मिला है, ये गुफा से पीछे जाना होगा इसमें। That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. क्या वर्मा भाई क्या कह रहे हैं, जो लड़कियां ज्यादा बॉडी काउंट का शौक करती है Old world ruin down here. इनकी गुफा है ये। You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Aloy, found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed.
Zenith research lab. Looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So, exploring another far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. Zenith वालों का अड्डा है क्या? लोग कह तो रहे हैं Zenith के रूम में जाकर ढूंढते हैं कुछ। भूल जाता हूँ कि टच करके खोलना होता। Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. What were they This for? place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. So, how is Erend taking all of this? To control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. $236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Nothing. $236 containers in storage. Aloy. क्या हो गया क्या? और ये तो वही लोंडिया लोंडो उस दिन वाली जिसको ये लोग लेके आए थे। ये कह रहे तू है? हाँ एलिजाबेथ की कॉपी बना रखी है इन लोगों ने। इसको पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग, उठा उठा के ले जाते हैं। Must have cut this from her head. But why? ठंडी पड़ी है। Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsineth. They are ruthless, and they have Aletheia, Artemis, and Apollo now. But at least I don't have the Gaia kernel to merge them with. एक फुट डरतीन से ये लोग इसको किडनैप करके लाए हैं, देखा? Succeed. Oh, this was all for nothing. Good luck. And goodbye. वो लोग साले हमें बोल रहे थे एलिजाबेथ की कॉपी हैं। कॉपी है मैं still alive. जो जिंदा है अभी भी। We need to get her back to. हाँ मैं निकालना होगा यहाँ से। शिट कोई आ गया लग रहा है। Oh shit, they can fly. Aloy. Aloy, can you hear me through this? हाँ सुन सकते हैं तेरे को। क्या चल रहा है वहाँ पे? Those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. अच्छा एक हमारी तरफ आ रहा Stay है। in cover until I get there. You got it. इसको बाहर कैसे निकाल के ले जाए ना Get her to cover. मुसीबत आ गई तो Whatever happens, she stays with us. जो भी होगा हम देख लेंगे, हमारे साथ तो रहेगा एटलीस्ट। नोंडो इसको बचा के ले जाते हैं हम। ये प्रोटेक्ट कर लेगा इसे, तो ठीक है। I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl and the clone. प्योर होना पड़ेगा पहले, इससे पहले वो रोबोट से आए।
Here it comes! Ooh, ugly one, aren't you? आ गया ये चल चल I should scan that thing. See if it has any weak spots. That thing's quick. रंग बिरंगा दिल हो या ब्लैक एंड वाइट हो। ये गाना क्यों बज रहा है दिमाग में? ऐसी सिचुएशन में गाने क्यों बजते हैं मेरे दिमाग में? There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Gotta get back up top and deal with that other Spectre. I just hope Aaron stays in cover. Aloy! Aaron! Yeah, the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. Oh, that doesn't sound good. I gotta get to Aaron. आ रहे भाई आ रहे, रुक जा। चल रहे लोडो निकल रहे हैं, बस निकलने वाले नहीं, ये निकल गए बाहर। I'm here. आ गए एरेंट हम। That thing's shooting down the center. Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. Shield. It'll be a tough fight if I take that building. Shield's down! It's on the move! A heavy weapon. That could help. Oh, here we go. Not fear. You need some ammo? I could use it against the Spectre. Wow, that thing does good. Aloy, get out of there! That's the quick way to take it down. Ah, that put a dent in it. Who's that? Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but
Right now, I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. रंग बिरंगा दिल होया black and white वे पर्दा हिजाब ने मन से ये white वे जुनून ले भाई Damn it. क्या करेगी आलोय Well, it's better than nothing. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone, too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. Aloy, glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. पुराना तरीका क्यों बोल रही है फोकस को Booting up. बूट हो गई So, Aloy, I suppose you want information about you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface. All so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want.
Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Baina's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbaina long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbaina, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric, he's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database, before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy, so it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge just out of reach must have been frustrating. All right, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, your plan.
How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. शांत हो जा. Calm down. हम मर जाएंगे. ऐसे बोल जा रही है. So is there anything you can do to help? मदद क्यों नहीं कर सकती हमारी फिर? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. 5 मिनट तेरे से. हाँ घबराया जा रही है हमको demotivate करे जा रही है. Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. लोंडो इससे बातें तो पता चली पर जब हमने बताया ना I should get the weapon fragment to Gaia. ने पूछा ना हमसे कि कितना लंबा है तेरा प्लान तो हमने बताया ना कि अभी 2 और फंक्शंस रह रहे हैं हेपेटिस को एक्टिवेट करने के लिए फिर गाया स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पूरी तरह से. उसने बताया कि इसने बोला फिर उसने बोला लड़की ने कि हैं अभी और रह रहे हैं बीटा लड़की ने यार कितना टाइम लगाएगी तू सब मर जाएंगे वो. No, but I must ask. The woman Varl and Aaron brought in, she's related to you. It's hard to explain. She's more of a copy. Good. If she's anything like you, we've just gained reinforcements. Maybe. हमारे तरह है but powerful नहीं है हमारे तरह. I heard my friend Talana came by the base. Did you get a chance to meet her? Briefly. A bold woman going into Tenakth territory with that Karja armor of hers. She'll be lucky if my people don't shoot her on sight. She'll be careful. She's just looking for someone who might need her help. Whoever it is, they better be worth dying for. Have you had a chance to speak with Varl? Briefly. He fought well against Regala's troops at Barren Light. Are all Nora as skilled as the two of you? I'm not exactly one of them. But anyway, the Nora can hold their own. They managed to push the Karja from their lands. I thought my tribe was the only one to have done that. Impressive. You said you were training with the Focus? That's right. I've been watching holograms of your first fight with the Zenith Spectres. They are faster and more agile than any machines I've faced before. How many do the Zeniths have? I'm not sure. Probably a lot. I would not wish to face them en masse. I'm with you there. Getting Ether out of the Grove made for quite a spectacle. One that showed the entire tribe that Hikaro's mission for peace is the correct path, for it is now blessed by the Ten themselves. I need to go. On your way, then. Gaia, what was this room for? This was intended to be a recreational room for Control Center operatives. I have repurposed the displays to track Regala's activity in the region. Welcome back. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. new guest आई हमारी. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it,
Maybe we'll gain the upper hand on the Zenith. A moment. I will scan it. गाय से तो ये ऐसे बात करती है अलोय जैसे सखी सहेली उसकी बचपन की. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zenith got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. या बाकी ये दो को ढूंढ के लाते Thanks, हैं. Gaia. So I guess we won't be making use of Cylon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. टोला हमसे कह रहा है कि अरे वो तेरे तरह लगती है तो फिर तो मजा आ जाएगा और भी तो वो भी तगड़ा लड़ती होगी. ऐसा लग रहा है. उसे ये नहीं पता वो चूतिया सी बेंचो. उसको देख मजे मारता रहता है ये. It makes you want to punch something. More like someone. वो मुट्ठी मार रहा है ऐसे करके. Errand? You okay? हेलो कह रही है तो ठीक है ना? Oh yeah. I mean, why wouldn't I be? Because there's 2 of me now. There's 2 of you now. At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those 2 lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. Did you speak? She didn't really... no use. What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. That reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in Stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. I have to get going. Don't go causing too much trouble. Aloy. Hey, thought I'd, check in on how you're doing. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? A little. Varl said she may be able to help us in our mission, though. Maybe. There is something I'd like to discuss. It's about the land gods. If you have time, that is. You said you wanted to talk about the land gods? I think there's a way to heal them so that they'll once again provide Plainsong with grain. Gaia gave me a set of instructions. She called it, reboot code. If we deliver it to the land gods, their derangement will end. That's great. Maybe. There are thorns on the path. Unless the code is given by Hephaestus, the land gods will reject it. Gaia showed me a way around this. We need components called control cores from machines made by Hephaestus. Machines similar to the land gods. You mean Grimhorns? Like the one we fought in the repair bay? Yes. Gaia helped me locate 2 of them out west.
So, kill the machines, get the control cores, then use them to adapt the reboot code into something the land gods will obey? If all goes well. But taking down 2 Grimhorns won't be easy. We'll do it together. Bless you, Aloy. I'll send you the location of the machines. I need to get going. May the land bloom in your steps. हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। याद आया लोंडो इससे? गाना मस्त लगा भाई। मैं उस टाइम पे बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था जब मैं स्टोरी लगा रहा था, तो ये गाना मैंने अपने आप ही आ गया। मैंने कहा यही लगा देते, स्टोरी पे जचेगा भी। ये गाना बड़ा मस्त है, पहली बार सुना मैंने। बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। अब से ये लगाऊंगा पोस्ट वाली वीडियोस के स्टोरी पे। पूरे क्या कर डाला, मर गई मैं और मिट गई मैं, और आ गई मैं ओ तेरी दीवानी, ये दीवानी। Chill air is prickling my lungs. I see you, champion. Sit. Next time, perhaps you could make a purchase. वो रंग भी क्या रंग है, हैरी ना जो तेरी सावरी जुल्फ की रूबरू, वो खुशबू क्या खुशबू। आजा मेरी बेल। Race? Definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks. भाई क्या गाना सुना है? क्या बारिश आ रही है। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी मैं घटिया गा रहा हूँ। मैं बचपन में कितना अच्छा गाता था मैं, तो 4th 5वीं क्लास में था मैं। हम लोग गोदी में बिठा लेते थे यार मेरे को। टूट तो था यार बचपन में मैं सीरियसली। अब कोई गोदी में नहीं बिठाती यार मैम लोग। तुम लोग ये मत कहना कि मैम लोग को आप ही उठा लो गोदी में। जी भाई आपको क्या बिठाएंगी मैम लोग गोदी में, तो आप ही गोदी में उठा सकते हो ना। हिंदी बात है नहीं नोटो। जब मैं बोलता हूँ जब भी एलोय को बोलना होता है, इसलिए भाई मैं चुप हो रहा हूँ। थैंक यू अल्लाह दी। क्यों ऐसा क्या कर दिया? बना दी प्लेलिस्ट कुणाल कंप्लीट गेम्स की। हाँ प्लेलिस्ट आ गया। पता अब पता चल जाएगी इन्फॉर्मेशन इससे। चाहो बीटा के लिए कह रही हो? पता तो चली बात है, पर वो डीमोटिवेटेड ज़्यादा कर रही है। ये भी गांड फाड़ रही है, हमारी भी फाड़ रही है। ये आ रही है करते बातचीत इनसे। Glad to see you made it. Thanks to the secret passage through your base. It was quite a sight. Secret passage? Don't let the others hear you say that, or you'll have a lot of Oseram knocking at your door. And you are? This is Raggard. He's a scout with this caravan. He says Amadis was here. He joined up with our expedition right before we went through the tunnel. After we made camp here, I set out to do some scouting. I also made peace offerings to the Tanakh for trespassing in their territory. Amadis wanted me to ask around about some place called the Rot. What did you find out? Most I learned was that it's where the Tanakh took their prisoners. Somewhere far to the west near Thornmarsh, the lowland clan's capital. He set out to find it not long after.
On his own? I tried to warn him, but he was dead set on going. Thanks, Raggart. This has been helpful. Hope you find him. Okay, I'll head for Thormarsh. Meet me there. Hold on. What? You're willing to go to the ends of Tenakth's territory to find this guy. No hesitation. Of course, he's one man alone in the Forbidden West. I'm just worried about him. I think it's more than that. I'll meet you near the lowland capital. But then, you're going to tell me who Amadis really is. Fine. I'll lay low, north of the village. See you there. क्या बीएमजी भाई अलोय ने मना कर दिया था उस लोंडे को उस दिन रिलेशनशिप के लिए? ऐसे तो आपने चूज करा था, बट फिर भी क्यों? आलिया दीदी क्या करे तुम लोग की? क्योंकि अलोय भी लेस्बियन है। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी। हाँ, उस दिन भी स्पॉइलर दे दिया था तुमने, इस बार भी स्पॉइलर दे दो लेस्बियन वाला। तुमको बड़ा इंटरेस्ट आता है अलोय की लेस्बियन में। बार बार बताती रहोगी अलोय लेस्बियन है। अरे भाई देख लेंगे भाई, स्पॉइलर मत दो। सस्पेंस रहने दो भाई। बट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि एलोय अपनी सेटिंग किससे बनाएगी। तो भाई ये समझ नहीं आ रहा अभी एलोय की हरकतों से तो लग तो नहीं रहा कि ये किसी को सेट करेगी, किसी लोंडिया को। एली का भी यही सीन था, बट वो भी लेस्बियन लिख ली ना। देखते हैं इसका टांका किससे बढ़ता है। अभी तक तो कोई पट्टी नहीं वैसे हमसे। बाकी देखते हैं आज के एपिसोड में पता चलता है, कल के एपिसोड में पता चलता है। 3 बजे तक स्ट्रीम करेंगे आज, बाकी आज के एपिसोड की पहले ही बता दिया था तुम लोगों को मैंने। I'll have to hook an anchor to the weak spots in its armor to weigh it down. I gotta hook an anchor to the Tolmec's weak spots. Oh, that sounds like trouble. And I need more anchors. The Osram set up other ballistas in the area. I just gotta use them. I've already used that ballista. I should look for others in the area. I bet a ballista can help me fight these machines. Another ballista. It's got all the anchors I need. One more should weigh it down enough. Machines. More dead awesome. Looks like they took a machine down with them. सारी एलोय को बदनाम करते रहते तुम मान लिया है, लेस्बियन है। इस तो जाओ भी देखने दो सारे एपिसोड लोंडो को हमारे, अभी पता चल जाएगा इनको। सारी को बदनाम करती रहती हूँ, बंदी कहीं की बंदी बच्ची। ये बत्तरी सांस की तुम चल। हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। कोई पुराना गाना है भाई। इनसे डरा करो, इनसे डरा करो। रिमिक्स मस्त कर रहा था। अल्लाह गया ये भी। अल्लाह चलो सही है, आलिया दीदी ने बना दी भाई तुम्हारी लिस्ट दोबारा।
हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आज कल। चुप ही हो रहा हूँ, हेलो चुप हो रहा हूँ मैं, काम करता हूँ, जिप लगा लेता हूँ मुँह पे, बोलूँगा ही नहीं मैं अच्छे में, ना खुलेगा मुंह और ना मैं बोलूँगा। हो जा हो जा हो जा, यस हो गया। वाह क्या कैमरा एंगल है भाई, वाइड एंगल से आ रहा है कुछ नहीं हो गया, ये रिबूट कर दिया लोंडो में से। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है। भाई एक 200 सब्सक्राइबर वाला था, उसकी पता है कितनी वॉचिंग आ रही थी? 14 वॉचिंग। लास्ट ओवर्स खेल रहा था, जब मैं लास्ट ओवर्स खेल रहा था मेरी भी वॉचिंग बताऊँ कितनी आ रही थी? एक वॉचिंग वाली। नाइस भाई नाइस। मुझे लगता है कभी कभी मैंशुद मेरी किस्मत में ही दिक्कत है, कभी कभी लगता है मैंशुद कि इंडिया गेमिंग कम्युनिटी ऐसी है इसलिए मेरी वॉचिंग कम रहती है, बट मैं दूसरों की देखता ना वॉचिंग, उनकी वॉचिंग ज़्यादा होती है मेरे से सब्सक्राइबर होके भी, तो भाई कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं लोंडो, सच में कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई मैं सीरियसली। मैं जो गलती किसकी है इसमें? मेरे सब्सक्राइबर ही बेंचो डेड है बेंचो। वो बात की एक बार, इससे अच्छा होते ही तो अच्छा रहता। अच्छी बात है साले बहन के लोड़े अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, देखते देखते तो है नहीं, अनसब्सक्राइब करें तो अच्छा है। तेरी Now I'll finish you. I'm under attack! बारिश की बोली समझता नहीं था, मैं लजता नहीं था, सीने में दिल कहाँ थी मुझे ये खबर। This must be the ruins of Las Vegas. Poseidon shouldn't be far. Gaia said this is where I'd find Poseidon, but the ruins out here are exposed to the elements. A lot of them are buried in the sand. So maybe Poseidon is underground. If that's true, I might be able to find a way down through one of these structures.
Gently. काल हो गया है ये मेरा Water's pouring out of the building. What's Simon's doing? I better check it out. चेक तो करना पड़ेगा. Tower of Tears. Wow, Tears. Camping gear. कोई तो है यहाँ पे. Looks like there's something behind the tent. वे कैसी आवाज आ रही है? वे ये लोग कौन है? ये तो वही लग रहा है मेरे को. I almost had him. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Morlund, it's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly a Norse spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. Someone's been through here. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. उसको ले जा रहा है. She's a stranger. कह रहा है अनजान है वो तुझसे You got a पूरा. name? Aloy. Morlund. Not a stranger anymore. कह रहा है stranger नहीं रही. भाई ये पिता हो गया भाई हम पे. I got the original schematics over here. भाई. Well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? Don't mind him. What's so important down there that you'd risk your life? ऐसा क्या नहीं चाहिए जो रिस्क में डाल रहा था अपनी लाइफ. Well, Morlund, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. हमारी बात मान Then रहा what if है. I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. This is my old Gramps promised me. I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting.
दम घुट रहा है मेरा, दम घुट रहा है। नहीं 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 नहीं। ओह फाइनली Got the compressed air capsule. Now to get all the machine parts. Probably get a guest list of 50. So we need at least 3 dozen kegs. Brown ale, maybe. No, for him, scrapper sap. Are you planning a party? Budgeting for Moreland's funeral. Thanks to you. I was this close. We were gonna move on. Leave all this nonsense behind, and you come along and you spark your wet noodle idea. It's going to work. I've heard that before. I'm always willing to engage in some commerce. I'll leave you alone. Do us a favor. Leave us all alone. ठीक है भाई, छोड़ देते तेरे को अकेला। According to Moreland, the herd should be south of here. Some kind of drone. Is it watching over this area? Might have some useful data. But how to get up there? Well, this is where Moreland said the herd would be. They must have moved on. I need to pick up their trail. Better look for tracks. There. Tracks should lead me to the herd. There's the herd. I should have the parts I need. Oh, the storm's whipped up a sand spiral. Great. Dogs. More machines. Deal with them first. क्या BMG भाई आज भी 3 बजे तक स्ट्रीम करोगे ये होराइजन फोरबिटन की, और फिर कल फाइनल होराइजन फोरबिटन की स्ट्रीम करोगे वो भी 3 बजे तक। फिर रोब्लॉक्स कब खेलोगे? अरे खेल लेंगे लोडो, पूरी 6 बजे तक रात हमारी होती है, सुबह के शनिवार की रात 6 बजे के सुबह तक हमारा टाइम होता है पूरा शनिवार की रात। अब तो फ्राइडे है, अब तो शनिवार है ना।
तो तेरी लगी गई चल बस तेरी चल 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 बस तेरी चल Allah Allah oh मारेगा दल्ले दल्ले One synthetic membrane. Better check the other machines. Maybe I might have a kneecap I can use. अरे यार तुम लोग की आलिया दीदी अभी एकदम गारंटी से कह रही थी कि अगर मेरा बच्चा लो तो 1000 वॉचिंग ला सकती है कैरी बट फायदा नहीं असली लोग देखे तो फायदा है ले आओ भाई 1000 वॉचिंग इतना गारंटी के साथ कह सकती हो तो बट फायदा नहीं है ना वो खुद कह रही है कि असली लोग देखें तो फायदा है समझ गया कैसे लाइए 1000 वॉचिंग रहने दो भाई फिर मेरे को वॉचिंग का चार्ज छोड़ डालना है ऐसी वॉचिंग का असली लोग ही अगर पाँच असली लोग ही देख लेना 5 वॉचिंग वही फ़ायदा है उससे ही मेरा फ़ायदा है हो जाएगा बेटर देन 1K फेक लोग बट मैंने ये भी नोटिस करा है लोग ना वॉचिंग देख के भी आते हैं मेरी वॉचिंग ही 1-2 आ रही होती है तो दूसरे लोग क्या करते हैं अब इसकी तो 1-2 वॉचिंग आ रही है मतलब ये कुछ खास नहीं कर रहा मेरी वॉचिंग इतनी ज़्यादा आएगी ना डेली तो भाई फिर लोग तो धड़ाधड़ आएंगे मैंने नोटिस करा है भाई लोग व्यूज़ और वॉचिंग देख के भी देखते हैं भाई चूज़ करते हैं स्ट्रीम और वीडियो साला मतलब खुद पहले अमीर हो बेंचो जब भी बाकी लोग आएंगे तुम्हें देखने बेंचो लोग आएंगे नहीं तो जब तक व्यूज़ और वॉचिंग बढ़ेंगे कैसे मेरे बेंचो लोग आते ही वॉचिंग और व्यूज़ देख के ये बड़ी दिक्कत है बेंचो अगर 5 असली के लोग देख लेना उससे मेरा बहुत फ़ायदा है 1000 फेक लोगों का क्या करूँगा मैं मुझे पता है बड़े यूट्यूबर्स तो फेक वॉचिंग भी लगाते हैं What can I do for you, partner? I've got everything I need to build the incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. मारा है भैया अलोय पे लाइन मारे जा रहा है अलोय एक्टिंग कितनी अच्छी कर रही है ये देख रहे हो तुम लोग मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस तो जो वॉइस एक्टर है अलोय की बहुत मस्त है भाई गेम में मोशन कैप्चरिंग अच्छे से हुई है There's a marvel. If it works, you'll let me try it? There's a very special salvage I want down there. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. But suddenly, the dancing lights around us changed. Lights? What do you mean? Images in the air, sparked by the embers, the salvage I'm after. Tiny hologram projectors? At first, there were lots of images. Women and coins and foodstuffs. And then, suddenly, they turned nautical. Waves. Fish.
there was this flash of red. And the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light. From a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay, time to see if this thing works. So far, so good. I can actually breathe down here. Oh, the mask seems to be holding up. I've never been able to swim this deep before. Nautical lights. It must be Poseidon's doing. That looks like a way out. Poseidon's down here, somewhere. Gotta find where it's hiding. Whoa! Fight that thing underwater. Be careful. This place is massive. And all of it's encased in a dome. That must be the red light that Norman saw when the water rushed in. Take a look at that red light I saw earlier. If it was a warning, maybe it's part of some kind of alarm system. Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that big machine on dry ground. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. More machines down here. I'll have to swim around them. Stick to cover. There's the access point. Should lead me to the pump node. There must be a whole network of these tunnels down here. Water lines for an entire city. I can't reach the ledge from here. Maybe there's something I can climb to get out. Whew. Well, that'll keep me awake. क्या मूतने की आवाज आ रही है भाई यहाँ पे तुम्हें भाई ऐसे मूतने जैसी ही लग रही है आवाज One node down.
Better swim back up and find the access point for the second node. There's the map. The second node should be on the other side of the dome. Another access point. Should get me to the second node. If that helped. Okay, I've taken care of both mains. Now I just need to activate the emergency code to the maintenance station. According to the map, the maintenance stations should be at the south end of the dome. There's red light in that tower, just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? Looks like part of this building collapsed. There might be a way in. Okay, let's see where this leads. I think I'm in the maintenance station now. I just gotta find a console to activate the emergency purge. Be a console in here. There. Time to draw this place out. हाँ कहाँ जाना पड़ रहा है नोडो सारे एलोय अब तो टाइट है That did it! Okay. Now I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. And once I get past it, I can get to what's waiting on the other side of the door.
Guess the purge didn't get rid of all of the water. Left these machines behind. Could sneak by them. Deal with the big one first. Yalla. Okay. Poseidon is through there. But where did that machine go? Aloy! It's a miracle! Was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. Yeah, it's gonna be difficult to get the embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, they knew what they had to do. What? Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage.
तेरी कलर्स कितने मस्त हो गए ना लोडो कलर्स वो खुशी बना रहे हैं अरे अरे कि तूने कर दिखाया लो ये Come on, gentlemen, get a move on. Oh, it is hot. You guys all right? More than all right. We did it! All the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, shard counter. Nothing wrong with a little reveling. Though we should probably let our flame-haired friend get going. I believe she has business down here, does she not? Right, of course. You need any help? I can handle it from here. Very well. Well, we'll start taking some of the embers upstairs. Holler if you need us. Thanks. क्या लाइव चैट में बकचोदी चल रही है भाई मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लाइव चैट है सट्टा पढ़ूंगा फिर मैं देखा बोल पड़ी इसलिए मैं चुप हूँ चलते भाई इसलिए भी मैं चुप हूँ क्योंकि ये बोलती रहती बार बार एलोय Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. There. I should be able to use that console. I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. Mother. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. I can't do it. I can't give up on this place. I'm leaving everything on standby. The system's equipped for runs for decades, if not hundreds of years. It's a long shot. Taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Worland and crew must have headed back up top. With all the embers they could carry. अभी अंजी भाई एक बार चैट पढ़ लो अरे पढ़ रहा हूँ भाई पढ़ रहा हूँ It started right here, more than 30 years ago. Back when this casino was still called the Temple. One big bet turned my fate around. But now, fate's dealt this cruelest hand ever. To everyone. I have to turn the lights out one final time. And the waters of my adopted home will at last run dry. Well, if a dream has to die, at least I can say goodbye first. Stanley Chen. What did he do here?
Whatever she did, it must have powered up the whole... Is that legal? How much did all this cost? Oh, show my old Gramps always wanted. There's another. ओ भाई ड्रैगन तो कांडी पड़ गई भाई साहब. His dream realized, his old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Well, come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the Climb. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew's gonna stay, maybe I should come back and check on them later. For now, I need to get Poseidon back to Gaia. But I might want to pay a visit to that other Ostrom camp I found first. And with my new diving mask, I should be able to swim as deep as I want to. Once I find a place with more water. The old ones created so many wonderful inventions to help others. To help the planet. Technology really can be an amazing thing. Yeah, until it gets a mind of its own and decides to kill everyone. You're just a ray of sunshine, aren't you? Only for you. क्या आज बीएमजी क्लियर कर दो भाई. क्या बीएमजी भाई क्या क्लियर कर दें. अरे भाई भाई गेम देख लो भाई. I see you have recovered Poseidon. अच्छा इसको पता चल जाता भाई हम क्या क्या ला रहे हैं. तो लोंडो में ये भी मिल गया लोंडो. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Got it. Ha! Hi! Happy birthday, Isaac. अरे ये तो वही दिखाई दे रहा है हमें. स्टार्टिंग में नजर आया था. अपने बेटे को विश कर रहा होता है. Your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. अच्छा हमारे फोकस से ये देख रही रिकॉर्डिंग जो हमने बचपन में देखी थी लोंडो अपने फोकस से. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little bit. But there's something you need to tell me? बताइए While हमें. you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? इसने बात करी. She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? सवाल अच्छा है. इससे बातचीत And कर then रहा she था. told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my
benefactors, and promised I'd meet them someday, when I had learned enough. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me, in a virtual replica of a house on a cliff, overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was the liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't, okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that, then. What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him, but he raised you. Trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. कहाँ से कितनी लंबी बातचीत चल रही है भाई? अंशु इतने ढेर सारे लाइव चैट पढ़ने पड़ेंगे मेरे को।
space. It sounds very... Hey, Aloy. Is everything all right? It seemed like you and Varl were down at that basement for a while. Yeah, everything's fine, I guess. Well, okay. What can I do for you? How are things going around here? Hey, you tell me. Varl's new girlfriend tried to kill me earlier. Huh? Varl की नई girlfriend? I made one joke about how they, you know, eat grass a lot. How does anyone fight with nothing but tree leaves in their stomach anyway? From the looks of it, the Utaru. Yeah, well, I wasn't expecting her to be that fast. Just try not to get hurt. Are you playing that board game I keep seeing everywhere? Oh, you mean Strike? Yeah, I'm just trying to get some practice in. Helps take my mind off things. Yeah, it's a Tanakh game. I thought about playing Katalo, but what if he tries to kill me if I win? I think you're safe. Yeah, I don't know. Heard a lot of things about that tribe. Do I smell ale? I brought some over from Chain Scrape. With everything that's been going on, I thought we could all use a drink. Besides, there is nothing that brings people together like a good brew. That's what my sister always said, anyways. You're more than welcome to have some. Maybe another time. You still sifting through loads of data? Yeah, it's interesting. There's lots of words. I thought maybe I could try finding things with more, pictures in it. Not much luck there, but I did find out about these holofilms. Like images put together to tell a story. They were made to look like they were the real thing. The Oseram like shows. I bet they pay a lot of shards for those hollows. It seems like you're getting a hang of this data thing. Yeah, it's been helpful. When I could make sense of anything. I did find the old ones enjoyed a good brew like the rest of us. Only they let machines serve the stuff in bars. They even let the damn things cut you off before you saw the underside of a table. And that's half the fun. You won't see me letting a robot serve me a pitcher anytime soon. I should get going. Back to reading, I guess. You be careful out there. ठीक है भाई, केयरफुल रहेंगे. दो मार रहा था साला. तुझे लौंडो. The door's unlocked now. पढ़ता हूँ आराम से तुम लोग लाइव चैट हैं. Mind if we have a word? Of course not. Does it still hurt? It comes and goes. I try not to think about it, but its absence is always present for me. It's difficult to explain. I can't claim to understand. Only empathize. Then you have my thanks. Have you spoken with Erend at all? I've had little chance to. I did see him bring some ale from out east. That stuff's as bitter as self-brush. You get used to it, eventually. In fact, I wouldn't mind a drink myself. I'm sure Erend wouldn't mind sharing. It must be strange, seeing everything through a focus now. I can see machines like never before. Their strengths and weaknesses simply reveal themselves to me. To think that such a tiny object might be the most powerful weapon I've ever possessed. What do you think of this place? It must take some getting used to. It's an efficient center of operations, and an acceptable training facility. Though it could use some more color. Duly noted. I should get going. If I can help in some way, say the word. I will. Thank you. This is where Zoe said we'd find the Grimhorns she needs parts from to heal Plainsong's land gods. I should let her know I'm here. Hey, Zoe. I'm near the Grimhorn site. Can you join me? I'll be there soon. Aloy, Aloy,
I'm glad we can do this together. The Grimhorns we're looking for should be just to the north. Let's go get those control cores. इस गेम में कहीं पे गर्मी का माहौल है, कहीं पे ठंड का माहौल है, पता नहीं भाई। Thank you again for helping me. If this works, if we can heal the land gods, it will end a generation of suffering for my people. How do you think Fane and the chorus will take it? They seem to think the tribe's extinction is inevitable. I've had my disagreements with them, but I'd like to see they'll be happy to be wrong on this. क्या BMG भाई आज? And they're not alone. We'll just have to be smart about this. I'll follow your lead. 6 तो पढ़ ली थी ना मैंने, रोब्लॉक्स वाली तो पढ़ ली थी चैट मैंने। BMG भाई दूसरे यूट्यूबर की कम सब्सक्राइबर है, लाइफ में ज़्यादा वॉचिंग कैसे आती है? भाई कुछ तो फेक वॉचिंग लगाते हैं और कुछ का पता नहीं क्या ही चक्कर है भाई, मुझे भी समझ नहीं आता कि वॉचिंग ज़्यादा कैसे आती है। मैं सब्सक्राइबर से ज़्यादा वॉचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके सब्सक्राइबर कम है वॉचिंग ज़्यादा आ रही है उनकी तो फेक वॉचिंग होती है। बट कुछ लोगों के कम सब्सक्राइबर है, मान लो किसी के 200 सब्सक्राइबर है, उनकी वॉचिंग 14 आ रही है, तो भाई उनकी फेक वॉचिंग नहीं है, उनकी तो वॉचिंग ओरिजिनल है। नोटो अगर सब्सक्राइबर से ज़्यादा वॉचिंग आ रही है ना तो भाई फेक वॉचिंग है। कुछ लोग तो कम सब्सक्राइबर पे भी वो फेक वॉचिंग चढ़ा लेते हैं, मतलब कि जैसे किसी के 1000 सब्सक्राइबर है उसकी 900 वॉचिंग आ रही है तो इसका मतलब समझ जाओ फेक वॉचिंग है। क्योंकि ना भाई वॉचिंग ना हमेशा कम रहती है चैनल से, और चैनल की आधी से भी आधी कम रहती है। तुम लोग बीच बॉय शिप का एग्जांपल ले लो, ठीक है, उस नमूने का। उसके मिलियन में सब्सक्राइबर है बट उसकी वॉचिंग 1-2 हज़ार आती है हमेशा, ठीक है। अब देखो कहाँ मिलियन में सब्सक्राइबर और कहाँ 1-2 हज़ार वॉचिंग है ना, आधे से भी कम, मतलब वॉचिंग इतनी कम होती है हमेशा हर एक चैनल की, आधे से भी कम होती है वॉचिंग हमेशा। सब्सक्राइबर 1000 होंगे तो वॉचिंग 500 नहीं आ सकती। अब मान लो मेरे 4000 सब्सक्राइबर हैं तो मेरी वॉचिंग हद से ज़्यादा 2000 आ सकती है, 1-2 हज़ार आ सकती है वॉचिंग मेरी, ठीक है। अगर मेरे 4000 सब्सक्राइबर है तो 2000 से ज़्यादा वॉचिंग आना पॉसिबल ही नहीं है। 4000 सब्सक्राइबर है तो आधी आ सकती है वॉचिंग, पर आधी से ज़्यादा नहीं। भाई मिलियन वालों की वॉचिंग कितनी कम आती है, 1-2 हज़ार आती है। किसी की 8000 वॉचिंग आ जाती है वो अलग बात है, किसी के मिलियन में हो तो, ठीक है। बट सब्सक्राइबर से ज़्यादा किसी की वॉचिंग आ रही तो फेक है, और अगर आधे से ज़्यादा आ रही है या आधी से ज़्यादा आ रही है वॉचिंग तो भी फेक है। तो ओरिजिनल की बात कर रहा था भाई, उनका भाई सब्सक्राइबर एक्टिव है भाई, मेरे 4000 सब्सक्राइबर मुद्दे हैं भाई। फिर किसी के 200 सब्सक्राइबर है उनकी 14 वॉचिंग आ रही है तो इसका मतलब भाई उसके सब्सक्राइबर एक्टिव है। इतने ऐसे चैनल आते रहते हैं मेरे फीड में, मैं उनके सब्सक्राइबर कम है मेरे से बट उनकी वॉचिंग ज़्यादा आ रही है। क्यों भाई, उनके सब्सक्राइबर एक्टिव है, मेरे सब्सक्राइबर एक्टिव ही नहीं है। तो वीडियो भी देखना छोड़ दी है छूटियों ने। देखा कल की वीडियो पे कितने कम व्यूज़ आए हैं, 10 व्यूज़ बस। मरी हुई है वो वीडियो, मर गई भाई वो वीडियो। हद है भाई, हद है। अरे तेरी का बहन चोद। चल भाई बाबा जी की बुट्टी पी ली। भाई उनके सब्सक्राइबर एक्टिव है भाई, सपोर्टिव है, और कुछ नहीं। 100 बात की एक बात, मेरे सब्सक्राइबरों को ना वीडियो देखनी होती है ना लाइव स्ट्रीम। पहले वीडियो तो देख लेते थे, अब तो वीडियो पे भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। नाइस, साले और ज़्यादा मुर्दे बन गए हैं। तो 10 के लोड़े इरिटेट होते हैं क्या अगर मेरी फीड या स्ट्रीम उनके फीड में आती है तो? अगर इरिटेट होते हैं तो अनसब्सक्राइब कर देना साले। कुछ अनसब्सक्राइब कर रहे तो करें, अच्छी बात है। बेंचो मुर्दे कम हो। बेंचो मैं तो कहता हूँ 1000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे, वो ठीक रहेगा। या बेंचो 100 ही सब्सक्राइब हो जाए बेंचो, फिर ठीक तो रहेगा, ज़्यादा अच्छा तो रहेगा। बेंचो मुर्दों के पास भेजता है यूट्यूब, वो देखते नहीं है साले, और वो नहीं देखते तो बेंचो यूट्यूब फिर किसी को नहीं भेजता है मेरी वीडियो और लाइव स्ट्रीम। यूट्यूब का सिस्टम ही ऐसा है। बेंचो इस चैनल के अपने लोग नहीं देख रहे तो बेंचो बाकी क्या देखेंगे। यूट्यूब को लगता है मेरे कंटेंट में कमी है, पता नहीं बेंचो मेरे सब्सक्राइबर ही मुर्दे हैं, बहुत बहन के लोड़े। BMG भाई दूसरा अच्छा पढ़ लेता मैं। Thank you. Gaia showed me a way to scan them and take what we need to update the reboot code. I'll head back to base and get started.
When I was a child, there was always enough to eat. The land gods provided for us, and every season we celebrated them. My happiest memories come from those times. Do you really think we can bring them back? We'll make it happen. Thank you, Aloy. कोई ना, हम कर लेंगे, ले आएंगे तेरी मेमोरीज। So we'll probably need some time to sort through those cores. I should do something else in the meantime. क्या मैं तुमको गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट दूंगी कुणाल, 1000 वॉचिंग एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, 1000 वॉचिंग, फिर देखना ग्रोथ में फर्क आएगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो इंस्टा के कमेंट्स पे, यूट्यूब के कमेंट्स पे लोग कमेंट ही नहीं करते, अरे 50 रुपए में फॉलोवर लो, 200 रुपए में फॉलोवर लो। आलिया तुम तो ऐसे कर रही है सच में, ऐसे ये कुणाल एक बार ट्राई तो करके देखो, अच्छा लगेगा तो फिर खरीदना मेरे से। आलिया नया बिजनेस स्टार्ट कराया क्या, वॉचिंग और व्यूज बेचने का। मेरे को गिफ्ट में दे रही हो, फिर मेरे को लत लग जाएगी, फिर कहोगी कि अरे पैसों में दूंगी, अब तो पैसों में। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम बेच रही हो मेरे को। कहते नहीं है इंस्टा के कमेंट्स पे, चलो 50 रुपए में फॉलोवर्स लो, 2000 3000 वेंच 10 रुपए में, कुछ तो 10 रुपए में बेचते वेंच तो अलग ही है भाई। अब मुझे पता है तुम गिफ्ट देना चाहती हो, मुझे ले रहा था मैं। फेक वॉचिंग और व्यूज होते हैं ज़्यादातर लोगों के, तो आई नोटिस मैनी टाइम्स। वही तो भला कह रही है रहने दे तू आलिया। अरे क्यों भाई, तो हमेशा बोलती है बट एंड में कुछ नहीं होता है, जैसे बोल रही थी वीडियो के लिए। ये बात तो सही बोली पलक, ये बात तो सही बोली भाई, इस बात के लिए मैं साथ हूँ भाई। बेंच पानी भर दिया था तुम्हारी आलिया दीदी ने कि वीडियो डालो बेंच, डाल दी बेंच, घंटा कुछ नहीं हुआ। वीडियो तो खुद बेंचो डेड चली गई। मेरे डेड चैनल को क्या जिंदा करेगी बेंचो, तो वीडियो खुद ही डेड चली गई बेंचो। जबकि मैंने थंबनेल ऐसा बनाया, और जबकि बेंचो मैंने वीडियो में ऐसे टॉपिक घुमाया, बट फिर भी वीडियो डाउन चली गई। थंबनेल देख के तो क्लिक करते ही भाई इन फैन के लोड़े, बट फिर भी नहीं हुआ। अच्छी बात है मैंने डायरेक्ट बात नहीं करी और डायरेक्ट थंबनेल नहीं लगाया, नहीं तो बेंचो 10 व्यूज भी नहीं आते फिर तो। तुम हमेशा बोलते हैं एंड में। अच्छा आलिया कह रही है बर्थडे गिफ्ट है, ओके, पर तूने कौन सा कुछ दे दिया कुणाल को गिफ्ट में। पर मवाई कह रहे हैं अरे आलिया दीदी दिल ही दे देते BMG भाई को गिफ्ट में। मेरे को कुछ नहीं बोलने की जरूरत पड़ती है भाई, तुम लोग दिल की बातें कह जाते हो। अरे क्या बोल गया मैं, तुम लोग बहुत कुछ कह जाते हो भाई, मेरी जुबान हो भाई, तुम लोग जुबान भाई, मेरी जुबान हो तुम लोग, लफ्ज हो भाई मेरे तुम लोग भाई। मैं कुछ नहीं बोलता भाई, तुम लोग खुद ही बोल रहे तो। ओ भाई कह रहे शटा वर्मा, अंश भाई हंस रहे देख, अंश भाई अच्छा जब भी कह रहे थे BMG भाई चैट पढ़ लो, देख इनको मजे आ रहे थे, हंस रहे मजे से। अंश भाई स्मूथली खेलते, स्मूथली चुपचाप रहते हैं, पर सब मजे देखते और एंजॉय करते हैं। यार मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था बट नहीं आ पाई। ओए हाँ ये तो बात है भाई। कह रही है और कुछ स्पेशल गिफ्ट भी देती गिफ्ट में। अरे अच्छा कुछ स्पेशल भी देती गिफ्ट में। अच्छा कुछ अजीब ही होगा तेरे गिफ्ट में, बट मैं यूजफुल गिफ्ट ही दूंगी। अरे आलिया कह रही कुछ अजीब ही होगा। अरे भाई सब लड़ने को हो रही है भाई, दोनों लोंडिया लोग भाई सब। अरे लाइव चैट को यूथ का मैदान मत बनाओ भाई। अरे एक न्यूज़ आई थी, 2 लोंडिया लड़ रही थी एक लोंडे के पीछे, पता है एक न्यूज़ आ रखी थी। कल बर्थडे था ना मेरा, मैं सुबह उठा तो मेरी दादी टीवी देख रही थी, उसमें न्यूज़ आ रखी थी कि ना और 2 लोंडियाँ लड़ी एक लोंडे के पीछे। भैन जो इतनी बुरी तरह लड़ रही थी वो दोनों लोंडियाँ, मुझे तुम दोनों की याद आ गई उससे। एक दूसरे के बाल पकड़ रही बहन चो, एक दूसरे को सूत रही भाई, सब लोग तमाशा देख रहे भाई साहब। वो लोंडा तो फिर लिया बहन चो, वो भग गया लोंडा, सही करा भाई उसने। अब वो बेंचो ना उन दोनों उससे शादी करेगा ना उससे शादी करेगा, बेंचो और किसी से शादी कर लेगा। पहाड़ में जाओ बेंचो। क्या कहाँ पे था मैं? आलिया कह रही कुछ अजीब ही होगा तेरे गिफ्ट में, बट मैं यूजफुल गिफ्ट देती हूँ। अरे ऐसा क्या देते पलक दी? अच्छा पलक को कह रहे हैं अरे ऐसा क्या देते पलक दी गिफ्ट में, जरा हमें भी बता दो। देख 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 गंदी सोच गंदा इंसान वर्मा वो तो सरप्राइज है कुणाल के लिए। ले नहीं बता रही वर्मा, ले बेंचो, अब सस्पेंस में जीतू बेंचो। वर्मा वो तो सरप्राइज है कुणाल। अच्छा बर्थडे तो चला गया, गिफ्ट का क्या फायदा?
अंश भाई को देख, अंश भाई बड़े बुजुर्गों की तरह वेंचर कॉमन सेंस वाली लॉजिक वाली बात करते हैं। वेंचर तो बर्थडे चला गया बेटा, अब क्या दोगी? अंश भाई तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है भाई? मेरे को गिफ्ट मिल रहा है तो अंश भाई लेने दो ना भाई मेरे को गिफ्ट। वैसी वेंचर जिंदगी में कोई गिफ्ट देने वाला है नहीं। साला लोंडा दोस्त कोई विश ही नहीं करता वेंचर, तो गिफ्ट की जरूरत, गिफ्ट की तो दूर की बात है। गिफ्ट की तो फिर भी दूर की बात है भाई, विश ही नहीं करता वेंचर तो कोई गिफ्ट कोई क्या ही देगा। चल लोंडा दोस्तों से कोई भी, अब ये दोनों गिफ्ट दे रही है तो वेंचर लेने तो दो मेरे को क्या। अरे बीएमजी भाई की किस्मत अब तो सच में किसी बहन के लोड़े ने लिखी है। बेचारे बीएमजी भाई सरप्राइज से वंचित रह गए। ये तो बात है भाई, मैं भी सस्पेंस में बैठा हूँ, क्या सरप्राइज देती हूँ भाई ये। बेचारे ने बुकिंग कर ली थी। ये बात तो है भाई, वंचित रह गए तुम्हारे बीएमजी भाई सरप्राइज से। वेंचर किसी बहन के लोड़े ने लिखी है भाई, मेरी किस्मत में तो कहता ही हूँ। और देखा वेंचर तबीयत खराब हो गई आज मेरी, साला एंजॉय कर नहीं पाया। बेंचो रिजल्ट वो सर्टिफिकेट लेने गए चूती हुए तरह, बेंचो उसमें तबीयत खराब हो गई मेरी। साला कुत्तों की तरह घिसाऊं कल मैं क्या? अरे आ नहीं पाई इसलिए गिफ्ट भी रह गया। चांच भाई को कह रही है आ नहीं पाई, अल्ले कह रही है आ नहीं पाई इसलिए गिफ्ट भी रह गया, इसलिए कुछ तो देना पड़ेगा ना गिफ्ट में। सही बात है। संस्कारी लूँगी और मैं ऐसे गिफ्ट दूँ, और मैं ऐसा गिफ्ट दूँ जिससे कुणाल के करियर में हेल्प हो रहा है। तुम लोगों की आलिया दी को भाई करियर की बड़ी सोचती रहती है भाई, करियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा हो चाहे इसको, अच्छी बात है। ऐसे समझदार तो अच्छी लगती है मेरे को लोंडिया लोग, क्या अच्छी बात है। यूजफुल गिफ्ट होगा फिर तो, भाई भी बोल रहे हैं। अच्छा अंश भाई को क्या लग रहा था वो टेडी बियर देगी मेरे को? जब अंश भाई कह रहे थे अरे गिफ्ट क्या करोगे तुम भाई? वो निब्बी नहीं है भाई वो। आलिया दी आप बीएमजी भाई की जिंदगी में आ जाओ, फिर करियर में क्या, फिर तो पूरी जिंदगी संवर जाएगी बीएमजी भाई की। ओ भाई अरे ध्यान से कूदे लोड़े लग जाएंगे मेरे। ओ भाई ये मस्त भाई, ये मस्त भाई। कमेंट ऑफ द डे भाई, कमेंट ऑफ द डे। अरे वर्मा भाई आप बीएमजी भाई की जिंदगी में आ जाओ, वही काफी है। करियर में क्या बहन से फिर तो पूरी जिंदगी संवर जाएगी। अबे बहन वर्मा भाई यार तुम कभी कभी भाई, अरे यार इसलिए तो कह रही हूँ मेरे को करने दे कुणाली है क्या करने दे। अच्छा हेल्प होएगी करियर में, इसलिए कह रही हूँ ये करने दे मेरे को कुणाल। ओके कुणाल की वॉचिंग 1000 आएगी, डोंट वरी, वोट्स नहीं होंगे, एड्स से लाऊंगी। अच्छा ठीक है, ओरिजिनल वॉचिंग होगी फिर तो, ओरिजिनल वॉचिंग होगी फिर तो सही है। बट वो चैट वैट तो कर नहीं पाएंगे वो लोग फिर क्या। बस गाली मत देना, बाकी मैं संभाल लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं तो देता भी कहूँ इतनी आजकल गालियाँ। अच्छी गेम में मैं गालियाँ नहीं देता ना, चूतिया सी गेम होते हैं ना उनमें मैं गालियाँ देता हूँ। इस गेम में तो वैसे भी बकचोदी नहीं करता भाई मैं, वो तो आज तुम लोग लाइक चैट में कर रहे हो इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं। ट्राई करना चाहिए, अंश भाई कह रहे हैं ट्राई करना चाहिए। हाँ आलिया दीदी बोल रही है इसलिए अब तो ट्राई करना चाहिए। कल का फाइनल एपिसोड ज़बरदस्त जाने वाला है। हाँ वॉचिंग ज़्यादा आएगी तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी मैं विश्वास नहीं करता कि मेरा फ़ायदा होगा नहीं होगा, वो तो लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद पता चलेगा कल की कि कैसा रिस्पॉन्स रहा 1000 वॉचिंग से। वर्थ इट होगा ठीक है, जेन्युइन वॉचिंग होगी तो यूट्यूब दिखाएगा, यूट्यूब काउंट करेगा। अगर नहीं होगा तो यूट्यूब शो नहीं करेगा, यूट्यूब 1-2 हफ्ते बाद माइनस कर देगा। वो तो स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद पता चलेगा कल वाली। यूट्यूब बहुत बड़ा है सच में बता रहा हूँ मैं। अगर हम खुद से कुछ कोशिश करते हैं ना यूट्यूब साला माइनस कर देता है, जबकि हम जेन्युइन कर रहे हो कुछ। गूगल एड्स से पता है फ़ायदा नहीं होता है, गूगल एड्स से ना काउंट नहीं होता है, कुछ घंटे काउंट नहीं होते हैं। तुम जो लगा रही हो ना गूगल एड्स से या किसी से भी लगा रही हो, मेरा वॉच आवर काउंट नहीं होगा उससे, व्यूज़ काउंट हो जाएंगे, वॉच आवर काउंट नहीं होगा। वॉच आवर तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं घंटे तो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बाकी तुम कह रही हो तो देखना, तुम देख लेना आगे, तुम समझदार हो, तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता, तुम्हें करना है तो तुम चिंता संभालो। क्या मतलब आलिया दी की हाँ है इंटरेक्टिव, क्या है
अच्छा ये यहाँ पे था ना, मैं जब काम सीधे से ना चले तो उल्टा रास्ता पकड़ना चाहिए। अरे अरे आलिया तू कह रही है ये बात, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा भाई। अब तो आलिया भी खुंदा खा गई भाई यूट्यूब से, ले वो ऐसी बातें कर रही है, कभी करती नहीं है। उल्टे सीधे रास्ते पकड़ने की बातें नहीं करती भाई तुम्हारी आलिया भी कभी। आना ना ना घर को बेशक उल्टा रास्ता जा रहा होगा ना, पर तुम्हारी आलिया दी सीधे रास्ते पे चलेगी। बट आज पहली बार उल्टे रास्ते पे चलने के लिए कह रही है। उल्टा इतना भी मत चला देना कि बेंचो मेरा करियर ही उल्टा दौड़ जाए। पता चले बेंचो फायदे की जगह नुकसान हो जाए मेरा। अब तो बेंचो नहीं बनाने वाला मैं कोई रोस्ट वोस्ट वीडियो। बेंचो साला अलमारी में घुस के रिकॉर्डिंग करो चूती को तरह पसीने में बह के। पता है कितनी मेहनत लगी मेरे को वीडियो बनाने में बेंचो। इससे अच्छा भाई लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ, वो सही रहता भाई। 3 वॉचिंग आते बट कोई ना भाई, आती तो है, कुछ तो लोग देख रहे होते हैं, तुम लोग तो देखते हो। क्या वर्मा पहले कुणाल करियर तो सेट कर ले फिर ये सब सोचना। क्या सोचना? अच्छा आलिया दी भीमजी भाई की जिंदगी में आ जाए। अच्छा आलिया कह रही है अच्छा पहले करियर सेट कर ले BMG भाई फिर ये सब सोचना। मतलब आलिया दी हाँ इंटरेक्टली। आलिया कह रही है आई डोंट नो वर्मा। अब तो हाँ है तो हाँ है। अंश भाई कह रहे अब तो हाँ तो है भाई साहब, अब तो हाँ है बोल दी तो हाँ है। ये आज तक कब्जे में ले लो तुम लोग। और पलक क्या बोल रही है? एक्सक्यूज मी मैं अभी हूँ। ओ भाई साहब ये बस्ता भाई एक्सक्यूज मी मैं तो अभी हूँ, मैं अभी हूँ ठीक है। तुम लोग ये सब बातें कर रहे हो, अभी मैं हूँ। ओ भाई साहब मैं तो भूल ही गया था। ओ भाई सही बकचोदी हो रही है भाई, सही बकचोदी हो रही है। अंश भाई हंस रहे हैं एक्सक्यूज मी मैं अभी हूँ। वही तो भाई जो बात ही ऐसी हो रही है। वर्मा भाई खुले में भाई भाई मामला सेट कराने में लग रहे हैं बेंचो मेरा। और बेंचो वो तो बोल रही है अभी मैं हूँ बेंचो। आलिया कह रही है अच्छा हमें तो पता ही नहीं था पलक कि तू अभी है। भाई आलिया दी भाई तुम्हारी फॉर्म में है भाई आज। ओ भाई बोलती नहीं है भाई, बट जब बोलती है तो करता ना बोलती है। अब चलो भाई गेम पे फोकस करते हैं, बाकी का बाद में पढ़ूंगा। अरे बेंचो बैंक का लोड़ा तीर मार रहा है। अब फाइट करने नहीं आए हैं। ले बेंचो वो बात नहीं आ रहे, मारे जा रहे देख। दोस्त नहीं बनने वाले हम लोग, लड़ना पड़ेगा मैं भाई। फेशियल एक्सप्रेशन मस्त है भाई, फेशियल एक्सप्रेशन मस्त है लोगे भाई। मैं गेम खेल रहा हूँ ना जब से मैं नोटिस कर रहा हूँ। बेंचो तीर क्या आया मेरे पिछवाड़े के पीछे। आलो ये लोगो के लोड़ो आलो मेरे पिछवाड़े पे तीर मारोगे। अच्छा तू आया, अच्छा खुद ही मरवाना है अपनी मर। अब तू मिलके वार करेंगे। बच गया भाई, अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे होता ना मेरे पिछवाड़े पे भूल जाता तीर। हेलो ये कहती टूटिया कहीं का BMG चैट पढ़ ले बस, पायल गेमिंग की तरह है ना। गेम पे ध्यान हट गया। अरे यार मारे जा रहे थे भाई, कितने बंदे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन सोचता है भाई एलोय भाई। मतलब इतने रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस भाई, इतने तो असली इंसान के नहीं होते भाई। कोई 30 साल की उम्र वाली लड़की ने वॉइस एक्टिंग करी है एलोय की ना, इससे पता चल रहा। कोई ना अच्छी लगती है भाई, एक्सप्रेशन अच्छे दे दिए। लास्ट ऑफ अस के बाद एक लोती गेम है ये जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं लोगों। लास्ट ऑफ अस के बाद मैं ऐसी कोई गेम खेल ही नहीं पाया जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम तगड़े हो, एकदम तगड़े। According to Gaia, it should be somewhere in these rooms. एसेसिन के शैडोज की तो बात ही मत करना। उससे अच्छे तो बेंचो फेशियल एक्सप्रेशंस तो बेंचो अनचार्टेड 3 के थे 2011 की गेम के। सच में भाई एक्सपेक्टेशन 33 अच्छी थी, इसमें भी एक्सप्रेशन अच्छे थे, बट जो इसमें बात आ रही है ना लास्ट ऑफ अस की तरह राइजन 4 बिटन में। 4 बिटन 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 4 बिटन
होराइजन जीरो डॉन के भी अच्छे थे। ये Looks like some sort of old office complex. लोंडो, तुम लोगों ने एक बात सीखी तुम लोगों ने लास्ट ऑफ अस और ये होराइजन वाली गेम से, एलोय और एली से, कि ये लोग लोंडो लोगों को मना कर देती है अगर कोई लाइन मारता है तो। इसका मतलब क्या हुआ? इनको लोंडियों में इंटरेस्ट होता है जब ये लोग लोंडो लोगों को मना करती है। ये बता नहीं सकती ना हम लेस्बियन है, इसलिए मना कर रही है हम। तो इसका मतलब अगर तुम्हें कोई मना करे लोंडिया अभी लाइफ में, तुम लोग किसी लोंडिया को प्रपोज करो और वो लोंडिया मना कर दे तुम्हें, तो इसका मतलब क्या है लोंडो? मतलब वो लोंडिया भाई लेस्बियन है भाई। फिर वो अगर कोई लोंडिया तुम्हें मना कर दे ना तुम प्रपोज करो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ भाई वो लेस्बियन है लोंडिया, उसको लोंडो में इंटरेस्ट नहीं है। समझे? इतनी अच्छी सीख दी ना मैंने तुम लोगों को इन गेमों से। हाँ यार, ज्ञान तो मैं नोच लेता हूँ मैं कहीं से भी। ज्ञान ही नोचूँ तो अच्छा रहेगा, और कुछ ना नोचूँ तो सही है। ये भी खोल दिया। अगर कोई लड़की तो कभी तुम लोग को मना करते, कोई लड़की वो लोंडिया तुम्हें कभी मना कर दे, तो मुंह पे बोल देना उसके, चल बैंक की पकौड़ी लेस्बियन गई की। समझेगा? कोई लोंडिया को प्रपोज करेगी तो। At least there's a console. A log. Just got off the line with US Robot Command. Time's running out. Didn't have the heart to tell Harris that our cure might be worse than the disease. Even if adamantine wreath works, we still have to prove we can curtail the trailing plants efficiently. But Cobble's team is working on it over at Test Station Ivy. He'll come through. He has to. Adamantine wreath. Another secret project. Well, they made the metal flowers here and the vines, so maybe I can find a way to destroy them. If I can find Test Station Ivy. How do I get out of here? There we go. Great. These guys again. कोई तो दोबारा आ गए लोंडे। They want me dead. लोंडो। हाँ पता है मेरे को, फिलहाल 3 बज के पता है मेरे को, 2:59 हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं स्ट्रीम यहीं बंद कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने गेम रोक दी, थोड़ा यहीं रोक दिया, स्ट्रीम यहीं रोक दी है, क्योंकि 3 बजने वाले हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट में बजने भी वाले हैं, कुछ सेकंडों में। लो बज भी गए 3। ठीक है, इसलिए लोंडो अब 3 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को सिखाया था 3 बजे तक स्ट्रीम करेंगे बस। बाकी भाई मेरी तो आंखों में नींद नहीं है, जैसे रोज रहती नहीं है। ठीक है, जैसे रोज नहीं रहती है नींद, ऐसी आज भी नींद नहीं है मेरी आंखों में। मैं तो चाहता हूँ और स्ट्रीम कर लूँ, ठीक है, और हम गेम खेल ले, बट तुम लोग को स्कूल जाना है, ठीक है, आज सुबह। तो इसलिए ये एपिसोड, ये स्ट्रीम यहीं रोक लें तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी आज कौन सा दिन है? सैटरडे कर रही है रैली। ठीक है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई भाई। 50 रुपये मत काटना, कोई 1 रुपया नहीं मिल रहा है मेरे को। ठीक है, बस गवाए जा रहा हूँ। 1 रुपया नहीं, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाखों रुपया यूट्यूब पे, हाँ, गेमिंग में। तो ठीक है लोंडो, अभी स्ट्रीम ये एपिसोड यहीं रोकते हैं। बाकी आज सैटरडे है, और सैटरडे को क्या होता है? सैटरडे नाइट को मस्तीबाजी होती है भाई, फुल रात बकचोदी होती है, फुल रात गेम खेलते हैं। बाकी तुम लोग को मैंने बता ही दिया, ये गेम 10 घंटे की रह रही थी, तो हमने अभी तक कितने घंटे की खेल ली है? कितने घंटे की खेल ली है? बताओ 5.5 घंटे की खेल ली है अभी तक हमने गेम। ठीक है, 10 घंटे में से हमने 5.5 घंटे की गेम खेल ली है। तो जो बाकी की बची है गेम, वो आज हम खेलेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक है लोंडो, समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना लोंडो? मैं सही कह रहा हूँ ना? तो जो बाकी गेम बची है वो आज रात को कंप्लीट कर देंगे। आज के फाइनल एपिसोड में, आज रात को फाइनल एपिसोड आने वाला लोंडो। ठीक है, तो तुम लोग देख लेना जरूर से।
देखोगे यार, तुम लोग तो देखते ही हो। मैं भी ना किसी अजीब अजीब बातें करता हूँ लोगों। तो आज रात को हम ये गेम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम रोब्लॉक्स खेलेंगे। आज रात को इस गेम का फाइनल एपिसोड होने वाला है, जो कि होगा एपिसोड 4 लोंडो। ठीक है, तो 4 एपिसोड में हमने ये गेम निपटा दिया लोंडो। खुशी बनाओ लोंडो, मजे मारो लोंडो। बट लोंडो हमें खुशी नहीं होगी, क्योंकि ये गेम बहुत ही अच्छी थी लोंडो। ठीक है, अभी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ बहुत अच्छी गेम थी, जबकि अभी तो रह रही है लोंडो, क्योंकि आज रात को खेलेंगे लोंडो। ठीक है, बहुत ही गंदे स्टाइल में बोल रहा हूँ मैं लोंडो, पता नहीं क्या हो गया मेरे को लोंडो। बकचोदी करने की आदत हो गई है भाई, लाइफ में बकचोदी करने की आदत हो गई है, बिना बकचोदी के मन कहाँ लगता है। तो ठीक है लोंडो, 3-2 गए लोंडो। अब ये स्ट्रीम एपिसोड ये बंद करते हैं लोंडो। ठीक है, बाकी मैं लोंडो मिलता हूँ तुम लोगों से दोपहर को। कितने बजे लोंडो, कितने बजे बताओ बताओ। 1 बजे लोंडो, वो 1 बजे वो जो अपना रूटीन है फिर से स्टार्ट कर देंगे लोंडो। आज फॉलो करना आज से। ठीक है, आज रात से वैसे कर ही दिया था, कल रात से। ठीक है, स्ट्रीम से फॉलो करना रूटीन, तुम लोग पता ही है। बाकी कल भी मैंने ऐसे बोला था, कल सुबह भी, कि फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, बट तुम लोग पता ही है मैं थका हुआ था, मेरी बॉडी में पेन हो रहा था। तुम लोग को मैंने उसी स्ट्रीम में कह दिया था, रोब्लॉक्स वाली में, बर्थडे वाली स्ट्रीम में, कि पता नहीं लोंडो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट आज से तो लोंडो रूटीन फॉलो हो जाएगा लोंडो। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में ही स्ट्रीम शेड्यूल पे लगा दूंगा। कौन सी गेम की स्ट्रीम में मिलूंगा तुम लोगों से? बियॉन्ड दी टू सेल्स की स्ट्रीम में लोंडो। इसकी स्ट्रीम में बियॉन्ड दी टू सील्स, अबे बियॉन्ड दी टू सूल्स, बियॉन्ड दी टू सूल्स। हाँ, तो लोंडो उसकी स्ट्रीम में मिलूंगा तुम लोगों से 1 बजे दोपहर को। बाकी शाम को लोंडो कौन सी गेम खेलेंगे हम, कौन सी खेलेंगे रूजा लोंडो, मेरे को देखने दो लोंडो, रूजा लोंडो, मेरे को शेड्यूल देखने दो अपना। मैं भूल जाता हूँ लोंडो, हो जाता है मेरे से। हाँ, ड्रैगन डोगमा 2 की स्ट्रीम में मिलेंगे लोंडो। बियॉन्ड दी टू टूल्स का एपिसोड 1 और ड्रैगन डोगमा 2 का एपिसोड 1 ऑलरेडी डला हुआ है लोंडो, हिंदी डबिंग के साथ लोंडो। 1 साल पहले से डला हुआ है ऑलरेडी दोनों के एपिसोड, इसलिए जाके देखना बिल्कुल मत भूलना लोंडो। ठीक है, बाकी जब भी तुम्हें टाइम लगे तो देख लेना उसका एपिसोड। ठीक है, इन दोनों गेम्स के एपिसोड 2 देख लेना लोंडो। मैंने तुम लोगों को कल ही कह दिया था ये बात। ठीक है, बट फिर भी तुम लोगों ने नहीं देखा, तो इसमें तुम्हारी गलती है लोंडो, क्योंकि मैंने पूरा दिन स्ट्रीम तो करी नहीं थी लोंडो, तो इसलिए तुम लोग को कल ही देख लेना चाहिए था इसका एपिसोड, इन दोनों गेम्स के एपिसोड 1, है ना। तो बाकी लोंडो अभी स्ट्रीम एपिसोड ही एंड करते लोंडो। और हाँ, लाइव चैट पढ़ लेता हूँ स्ट्रीम एंड करने से पहले, नहीं तो तुम लोग मेरी गांड पे गोली मार दोगे लोंडो। ठीक है लोंडो। कितने इरिटेटिंग स्टाइल में बोल रहा हूँ मैं लोंडो। रुक जाओ यार, कहाँ पे था मैं, कहाँ पे था? फोन से ही पढ़ूँ मैं, कंप्यूटर से छोड़, दूसरे मॉनिटर में पढ़ना बेकार है, फिर ऊपर जाओ पूरा। क्या था, कहाँ पे था मैं, कहाँ पे था लोंडो यार? कैसा क्या दे दिया पलक दीदी, रुक जाओ। अच्छा, वो बोलती ना एक्सक्यूज मी मैं भी हूँ। अच्छा, हमें तो पता नहीं था पलक तू अभी भी है। वो देख पलक कुछ बोल नहीं पाए। तुम्हारी आलिया दी के आगे कोई बोल सकता है क्या? ओ भाई, बोल ले आलिया, बोल ले, वक्त मेरा है होगा। ओ तेरी भाई साहब, बोलिए भाई लोंडिया भाई, भाई बावली बच्ची बोल दी भाई हमारी भाई, बोलिए भाई, बोली भाई, मुझे लगा बोली नहीं कुछ, बोलिए भाई। धमकी दी है सीधा खुले आम भाई साहब। अरे भाई साहब, धमकी वमकी चल रही थी बेंच पूरे एपिसोड में लोंडिया लोगों की भाई साहब। युद्ध का मैदान हो रखा था भाई कति भाई साहब। दिन तेरा होगा साल में रहो बेंच, वाह भाई वाह। बोल आलिया, वक्त तो मेरा होगा। अब आलिया दी क्या बोली तुम लोगों की, ये तो कुणाल ही बताएगा आने वाले टाइम में। और भैंस कॉन्फिडेंस एक भाई, कॉन्फिडेंस लोंडो, जितना इन दोनों लोंडियों में कॉन्फिडेंस है ना, उतना कॉन्फिडेंस ना मेरे को भैंसो मेरे को चाहिए अपनी लाइफ में, इतना कॉन्फिडेंस भैंसो सच में भाई। फिर तो भैंसो मैं धरती पे पैर मार के पानी निकाल दूंगा भाई। अंश भाई कह रहे हैं दोनों लाइन पे है बीएमजी भाई के लिए। अरे अरे भाई साहब, लाइन पे कौन सी, हेडफोन की लाइन पे? पता नहीं भाई। अच्छा, लाइन में लगी हैं। अच्छा, वो लोंडे लोग बोलते हैं ना, हम मेरे लिए तो लोंडे लोग लाइन पे लगे। अच्छा, मैं बोला हूँ यार, मैं थोड़ा देर में समझता हूँ लोंडो। अरे भाई साहब, मजा आ रहा है, वर्मा भाई को देख। अरे भाई साहब, मजा आ रहा है। और लड़ो दोनों दीदी लोग, और लड़ो, मैं विनर घोषित करूंगा। वाह वर्मा वाह, बहन चोद, मतलब भाई साहब आग लगाने की हद होती है भाई। खुले आम आग लगाई जा रही है, खुले आम बहन, खुले आम। लाइट चैट नीचे क्यों आ जाते हैं बार बार? मैं बार बार ऊपर करे जा रहा हूँ चूतियों की तरह।
आ गया यार मैसेज। हाँ था ये। हाँ यहाँ पे था ना। आज तो पता चल गया आलिया दी छुपी रुस्तम रुस्तम निकली। पलक दी प्लान बनाती रह गई और आलिया दी ने विकेट गिरा दी। नाइस आलिया दी। मैं तो कह रहा हूँ बीएमजी भाई मुसलमान बन जाओ फिर 2 शादी कर लेना क्योंकि दोनों ही दीदियाँ लोग मस्त हैं। वर्मा भाई थोड़े से तुम चूतिया वूतिया हो क्या? वैसे बात तो सही है बट भाई लुल्ला कौन कटवाए भाई अपना भाई लुल्ला भाई जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई। लुल्ला सबसे जिंदगी में इम्पोर्टेंट चीज है भाई। कुछ हो ना हो अपने गोटे अपने 2 गोटे और अपना 1 लोला जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोंडो। ठीक है ये 3 चीजों को बचा के रख लिया ना जिस मर्द ने तो वो मर्द कहलाता है लोंडो। ठीक है वो मर्द ही क्या बेंचो जो लड़ते हुए अपने गोटे फुड़वा दे बेंचो मर्द थोड़ी कहलाता है फिर वो। कहते हैं ना कि शादी के बाद बेंचो बच्चा पैदा नहीं हो रहा बाप नहीं बन पा रहा तो भाई इसी कारण नहीं बन पा रहा कोई कोई बेंचो गोटे फुड़वा लेगा अपने तो बेंचो शादी कैसे कर पाएगा कोई। ठीक है इससे अच्छा भाई अपने 2 गोटे और एक अपना लोला इंपॉर्टेंट है भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा। और तुम बेंचो कह रहे हो मुसलमान बन जाओ। बेंचो मुसलमान बनने का वो प्रोसेस देखा है वर्मा भाई तुमने? मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा भाई कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाए बेंचो मैं न्यूज़ में आ जाऊँ। बीजेपी वाले मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दे व्यूज़ बढ़ा दें क्योंकि बीजेपी वाले तो मुसलमानों से चिढ़ते हैं ना। वो खुद लोग खुश हो जाए हेडलाइन बना दे मेरे नाम पे देखो इस दरिंदे को ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। वैसे तो हमें मज़ा आ रहा है पर ये खिलाफ बोल रहा है। ठीक है वो लोग मेरे को पैसे दे फिर गोदी मीडिया और गोदी गोदी मेरे को पैसे दे कि अरे तुम्हारा पेड यूट्यूबर बन जा मुसलमानों के खिलाफ बोलता था। बाकी मेरी हेडलाइन बना बना के खुद छापेंगे मेरे को पिटवाएंगे कि मैं खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं भाई मेरे को नहीं बनना मुसलमान। कोई बात नहीं भाई नहीं करेंगे हम 2 शादी भाई। कोई बात नहीं हम एक से खुश रहेंगे। या बीएनजी भाई एक बार चैट पढ़ लो भाई पढ़ रहा हूँ वही। कुणाल इज ओनली माइन ओके 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 भाई। पलक दी तुम्हारी इंग्लिश चाट रही है भाई। उसे लग रहा है कि उसे लग रहा है वो इंग्लिश में बोलेगी ना इससे क्या होगा कुणाल ना मेरा हो जाएगा अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी कूल लगूंगी। वाले पलक दी तुम्हारी भाई कूल बन गई इंग्लिश में बकचोदी करके इंग्लिश झाड़ गए। मैंने एक बात नोटिस करी है लड़कियों लोगों की जब लड़कियां लोगों की कोई बात बन नहीं रही होती ना तो लड़कियां लोग ना इंग्लिश झाड़ने लगती है इंग्लिश कि उफ ही इज माई ओके। ठीक है ठीक है तो अब आगे क्या है अंश भाई कह रहे हैं पलक सिर्फ आलिया दी भी लाइन में है। अच्छा अंश भाई बता रहे आलिया दी भी लाइन में है। पलक कह रहे कुणाल को मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ किसी के भी साथ। अच्छा 2 शादी करे। अच्छा अच्छा भाई सीधा सीधा बोल दिया उसने तो। पहले बोल रही है तो रख ले कुणाल को तो रख ले कुणाल को भाई ये सही था भाई। कोई मना थोड़ी कर रहा है मैं नहीं हूँ लाइन वाइन में। अच्छा ऐसे बोल रही है आलिया दी तुम्हारी भाई क्योंकि आलिया दी आप तो ऑलरेडी। अच्छा वर्मा भाई बोल रहे हैं क्योंकि आलिया दी आप तो ऑलरेडी बीएमजी भाई के दिल के अंदर हो ना इसलिए आपको क्या जरूरत है लाइन की लाइन में लगने की आपको क्या जरूरत है। अरे भाई साहब वर्मा भाई अंश भाई कह रहे आज बीएमजी भाई क्लियर कर दो। अरे भाई साहब नहीं भाई नहीं क्या क्लियर भाई कोई मैटर ही नहीं है भाई अपना अपना भाई ये मैटर है। किसी ने मेरे को खुंदक चढ़ी बहन से तो बात ही खत्म भाई अंग्रेजन से शादी कर लूंगा बस बात ही खत्म भाई मैटर ही सॉल्व बहन से। अमेरिका में जाऊंगा और अंग्रेजों से शादी कर लूंगा वहाँ की सिटीजनशिप ले लूंगा बात ही करम मैं बात ही खत्म। या अमेरिका जरूरी थोड़ी है अंग्रेजन तो हर देश में होती है। अंग्रेजन से जाके शादी कर लूंगा वहाँ का सिटीजन बन जाऊंगा और बल्ले बल्ले इंडिया से छुटकारा मिल जाएगा। ना इंडिया होगा ना इंडिया में रहूंगा ना इंडिया की बीवी बहन से किसी ने खुंदक चढ़ गई तो मेरे को बहन से ऐसी हूँ भाई। हल्दी हंस रही आ रहे वर्मा। अच्छा लाइन वाली बात बोली ना वर्मा भाई क्या कह रहे हैं लड़कियां अक्सर सच बात पे ही हंसती है हंसी तो फंसी। अरे वर्मा भाई ये बात तो सही बोली। कोई बात नहीं मैं आ रही हूँ दिल्ली नेक्स्ट वीक कुणाल। अरे भाई साहब तुम लोग की पलक दी को भाई सर पे खून चढ़ गया भाई बुद्धि फिर गई भाई तुम्हारी पलक दीदी की भाई तुम लोगों की। भाई साहब कह रही कोई बात नहीं मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीक दिल्ली करूँगी सेलिब्रेशन और गिफ्ट दूंगी। बेंचो मेरा बर्थडे चूतिया सा गया। ठीक है कुत्ता के सीटी में गुजर गया पूरा दिन और बेंचो इनको अभी भी मेरे बर्थडे की पड़ रही है इनको बर्थडे बनाने की पड़ रही है मेरी गिफ्ट देने की इन दोनों को। कुछ फ़ायदा नहीं है पलक क्योंकि कुणाल के पास टाइम ही नहीं है। सही बात है बट आलिया तुम नहीं बोलती तो अच्छा लगता मैं बोलूँगा ये बात सही रहेगा तो उसको बुरी लग जाएगी पलक को फिर पता है ये बोल रही है। सच में मेरे पास टाइम नहीं है लोडो तुम लोग बताइए
अब थोड़ी लिख लूँगा मैं घर घर। कल देखा मैं पूरा दिन बाहर था तो देखो बेंचो कितना नुकसान हो गया। एक तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई, ठीक है, ऊपर से कल का दिन पूरा वेस्ट चला गया। कल मैं पूरा दिन बाहर था तो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया, ठीक है, लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया और तबीयत खराब हो गई तो आज भी लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। 2 दिन का नुकसान हो गया मेरा रोडो बाहर जाने से। इसलिए भाई अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब थोड़ी बाहर जाऊँगा मैं। जब कॉलेज का एडमिशन कराना होगा ना जब ही जाऊँगा मैं बाहर। क्या वर्मा भाई कह रहे हैं आज तो आलिया दी अपनी फॉर्म में आई है। आज आलिया दी बता रही है डायरेक्टली कुणाल तो कब से मेरा है, इसलिए अपना समझने की गलती ना करे कोई। अरे वर्मा भाई तुम बहन चो तुम युद्ध करा के मानोगे। अरे वर्मा भाई दंगे करा के मानेंगे क्या जनाब आप? गैस लाइटर ला कर दूं वर्मा आग लगाने के लिए और ज्यादा? भाई साहब आलिया ने बोली दे भाई सीधा अलग हंस रही है। अंश भाई कह रहे हो ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। अच्छा कुणाल 3 बज गए। अच्छा पढ़ लिए सारे लाइव चैट, ठीक है लोडो, लाइव चैट भी पढ़ लिए सारे, ठीक है, गेम भी खेल ली हमने, हम लाइव चैट भी पढ़ लिया, ठीक है, चिंता मत करा करो तुम लोग। क्या मज़ा आ गया बीएम जी भाई? हाँ थैंक यू यार, अंश भाई को मज़ा आ जाता है, अच्छी बात लगती है मेरे को। मैं ना बताऊँ क्या, गेम को इम्पोर्टेंस देता हूँ। लाइव चैट तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं बट गेम बाद में नहीं खेल सकते ना। आयल गेमिंग तो हूँ नहीं मैं, लाइव चैट पढ़ता रहूँ गेम पे ध्यान ना दूँ, ठीक है, मैं गेम पे पहले फोकस करता हूँ। लाइव चैट तो बाद में पढ़ूंगा आराम से, बाद में पढ़ लूँगा लाइव चैट तो, बाद में पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, शांति से आराम से पढ़ूंगा। गुड नाइट बीएम जी भाई। हाँ लोडो ठीक है लोडो, 3-13 हो गए। 3-13 अबे लोग तो एक दूसरे को कहते हैं ना 3-13 कर दूंगा तेरे। अरे लोडो इसका मतलब क्या होता है 3-13 कर दूंगा? अंश भाई कभी 3-13 करा है किसी का? 3-13 क्या होता है इस बात का मतलब? तेरे 3-13 कर दूंगा बोलते हैं ना, 3-13 कर दूंगा, पता नहीं भाई क्या होता है 3-13। तो लोडो 3-13 हो गए हैं ठीक है, तो हम अपनी लाइव स्ट्रीम के 3-13 होने से भी बचाते हैं अब लाइव स्ट्रीम को, ठीक है। 3-13 हो चुके हैं तो इसलिए हम ये लाइव स्ट्रीम को, ये एपिसोड को ही एंड कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग मेरे 3-13 कर दोगे फिर, ठीक है तो ठीक है लोडो, मैं एंड स्क्रीन प्ले करूँ, बाय बाय। हाँ हाँ लोडो बंद ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 3-13 करने के मूड में हो गए अंश भाई मेरे, ठीक है। मैं एंड स्क्रीन बंद कर, वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता हूँ एपिसोड यहीं, ठीक है। तो ठीक है लोडो, दोपहर के 1 बजे मिलता है तुम लोगों को बियॉन्ड दी टू सूल्स के एक नए एपिसोड में, पहली लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि 1 साल पहले तो नॉर्मल वीडियो डाली थी ना एपिसोड 1 की हिंदी डबिंग के साथ, इसलिए मिलता हूँ तुम लोगों से उसकी पहली स्ट्रीम में एपिसोड 2 में बियॉन्ड दी टू सूल्स के 1 बजे हमेशा की तरह। बाकी शाम को ड्रैगन डोमा 2 खेलेंगे जो कि ड्रैगन वाली गेम है, यस, उसका भी एपिसोड 1 ऑलरेडी डला हुआ है, तुम लोग देख लेना, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आ पाए आज जब से कंटिन्यू करूँगी गेम तो, ठीक है। मैं एंड स्क्रीन प्ले करता हूँ लोग। हेलो अंडो, आज की स्ट्रीम में, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर की स्ट्रीम में, फिर किसी एपिसोड में, तो तब तक ले गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दिल से सब्सक्राइब करने का, अनसब्सक्राइब नहीं करने का, सारा कंटेंट सोच समझ के देख के सब्सक्राइब करने का। बाकी ये स्ट्रीम को, ये एपिसोड को लाइक एंड शेयर करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना है शेयर करना, ठीक है। बाकी आज रात को ये गेम हम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आज सैटरडे को 24 मई को, ठीक है, अगला दिन लग चुका है क्योंकि, तो आज रात को हम गेम कंप्लीट कर लेंगे हमारी होराइजन फोरबिडन वेस्ट फाइनल एपिसोड में, फाइनल एपिसोड 4 में, ठीक है। बाकी फिर कल रात से, संडे से फिर हम दूसरी गेम खेलेंगे, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ संडे को हम कुछ हट के स्ट्रीम करें संडे को, है ना लोडो? देखते हैं, कल की कल ही देखेंगे लोडो, ठीक है। और लिस्ट वाली गेम्स हम चालू कर देंगे, लिस्ट वाली गेम तो ऑलरेडी चालू है लोडो, लिस्ट वाली गेम तो थी हमारी, अब तगड़ी तगड़ी गेम आएगी लोडो लिस्ट में, हॉरर गेम्स, ठीक है, मज़ा आने वाला है तो, ठीक है लोडो। अब ये स्ट्रीम एपिसोड है यहीं एंड करते हैं हमारा, ठीक है, ओके बाय बाय। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को भी तुम लोगों के साथ, और ये गेम भी अच्छी है, ठीक है। बाकी इनको आज कंप्लीट कर देंगे। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से 1 बजे हमेशा की तरह दोपहर को, अपना वही रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे आज से, ठीक है, दोपहर, शाम और रात, ठीक है। बाय बाय लोग, बाय बाय, टाइम से आ जाना तुम लोग, ठीक है। बाकी एपिसोड 1 देख लेना दोनों गेम्स के, ठीक है, जो आज से हम कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे हमारी पेंडिंग गेम्स, बियॉन्ड दी टू सूल्स और ड्रैगन डोमा 2। बाय बाय लोडो, सी या एंड गुड नाइट सबको।